गांव गरीब किसान मजदूर के धन्यवाद बारे में रजप्रसाद जी, चिंता नहीं किया। धन्यवाद। सिर्फ चुनाव के समय चिंता करती थी, चुनाव के बाद वो भूल जाने का काम करती थी। बहुत 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 धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे देश की विकास की स्थिति पर बोलने के लिए मौका दिया। महोदय, विकास तब होता है जब देश की लीडरशिप, देश के लीडर का विजन, देश के लीडर की देश में और बाहर स्वीकार्यता और इच्छा शक्ति, ये कई कारक हैं, जब होते हैं तब देश विकास करता है। और जब से 2014 से मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो हमें एक ऐसा लीडर मिला जिसमें सभी गुण हैं और सबसे बड़ी देश विदेश में उनकी स्वीकार्यता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण इश्यू होता है जिस पर शायद अब तक किसी माननीय सांसद ने उसको कवर नहीं किया, और वो होती है देश की कानून व्यवस्था। जब आपकी कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं, बम ब्लास्ट नहीं होते हैं जैसा कि यूपीए सरकार में होती रहती थी। महोदय, बहुत लंबी लिस्ट है। इस देश में जो विदेशी शक्तियां थी वो भारत की प्रगति को देख नहीं पा रही थी, और उस समय की जो लीडरशिप थी मोदी गवर्नमेंट के पहले, महोदय, देश में ब्लास्ट होते थे। जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद जर्मन बेकरी ब्लास्ट, हैदराबाद बुद्धा पार्क ब्लास्ट, गुवाहाटी ब्लास्ट, मोदी जी की हुंकार रैली में 2013 में पटना ब्लास्ट। महोदय, हमारे स्टेट में बनारस जो तीर्थ स्थल है, शीतला घाट ब्लास्ट, दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, संकट मोचक ब्लास्ट, कचहरी ब्लास्ट, ये तमाम ब्लास्ट से पूरा देश थर्राता था। महोदय, मैं केवल दो पर केंद्रित करूंगा, और वो है कि आतंकवादियों ने हमारे तीर्थ स्थल, हमारे पर्यटन स्थल, हमारे इकोनॉमिक केंद्र, उनको निशाना बनाया। महोदय, दिल्ली जो राजधानी है, महोदय, यहाँ 29/10/2005 को सरोजनी नगर पहाड़गंज में आतंकवादी घटना हुई थी। धनतेरस के 2 दिन पहले महोदय यहाँ करीब 70 लोग मारे गए थे। इसी दिल्ली में महोदय हाईकोर्ट में ब्लास्ट हुआ था। 7/9/2011 को 15 लोग मारे गए थे, कोर्ट भी सुरक्षित नहीं था। यूपी में भी कचहरी ब्लास्ट हुआ था 2007 में, वो था बनारस, अयोध्या, लखनऊ। महोदय, दिल्ली में फिर 13/9/2008 को ब्लास्ट हुआ था, बटला हाउस के एक हफ्ता पहले, और इसमें 30 लोग मारे गए थे। महोदय, जामा मस्जिद 19/9/2010 को ब्लास्ट हुआ था। उस समय कॉमनवेल्थ गेम था देश में। यूपी में 30 नवंबर को अयोध्या मामले में हाईकोर्ट का जजमेंट आना था। मैं ही उस समय प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था। सेंसिटिव थी हमारी स्थिति, और उस समय जामा मस्जिद के पास उन्होंने एक ताइवानीज बस, उस पर फायर किया, घायल हुए। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मीडिया पुलिस तक पहुंच गई, तब उन्होंने एक कार में ब्लास्ट किया। ईश्वर की कृपा रही, उसमें आग लगी। ब्लास्ट नहीं होता, नहीं तो 200-250 लोग मारे जाते। क्या था उनका? देश में दंगा फैलाना और कॉमनवेल्थ गेम को ये करना कि देश सुरक्षित नहीं है। तो महोदय, ये पक्ष था, और वो सब थे इंडियन मुजाहिदीन के। महोदय, यहीं पर बटला हाउस की घटना हुई 19 सितंबर 2008 से, टाइम हो रहा वो तभी। बटला हाउस में जो घटना हुई उसमें मारा गया यातिफ अमीन, इंडिया कमांडर था नॉर्थ इंडिया का। और जितने देश में ज्यादातर ब्लास्ट हुए उसमें आजमगढ़ मॉड्यूल जो हमारे प्रदेश में स्थित है वो ज्यादातर जिम्मेदार था, और उसका साथी साजिद मारा गया। महोदय, जब ये घटनाएं हुई तो हमारी बंगाल की एक चीफ मिनिस्टर, वो भी समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, गए वहां। उन्होंने कहा अगर ये झूठा नहीं है जिसमें इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए थे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। महोदय, इसी दिल्ली में, इसी पार्लियामेंट के सामने कुछ मीटर दूर 13/1/2001 को यहां पर हमला हुआ था जैसे मोहम्मद का। महोदय, हमारे 9 कर्मी, सचिवालय कर्मी और पुलिस सीआरपी के मारे गए थे। अभी हम लोग 13 तारीख उनको श्रद्धांजलि देंगे। जगदीश प्रसाद यादव, मातबर सिंह नेगी, कमलेश कुमारी, नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश जी, विजेंद्र सिंह जी और घनश्याम और देशराज जी। तो महोदय, ये
ब्लास्ट होते थे। दूसरा टारगेट किया इन्होंने मुंबई को 93 में टारगेट किया गया, जब दाऊद इब्राहिम ने मार्च 93 में ब्लास्ट किए, और उस ब्लास्ट में मुंबई में 257 लोग मारे गए। महोदय, इसी पर मैं कहना चाहता हूं, 257 मारे गए। और महोदय, उस समय जो मुख्यमंत्री थे 2093 में, जानते उन्होंने क्या कहा? जब ब्लास्ट हुआ, उन्होंने कहा था एलटीटी का काम है, कहीं उनके वोट बैंक पर असर ना पड़े। महोदय, 26/11 हम सभी जानते हैं, लश्करे तोयबा का हमला था, उसमें 2 आईपीएस अफसर हमारे और मेजर उन्नी कृष्णन, 15 पुलिसकर्मी मारे गए थे, 26 विदेशी मारे गए थे। पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया था। महोदय, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने झुठलाने की कोशिश की। एक बड़े नेता कांग्रेस के, मैं नाम लेना नहीं चाहता, बिजलाल जी, प्लीज कंक्लूड। प्लीज, हमारे पास टाइम बहुत बड़ा है। अदर स्पीकर्स आल्सो। जी, उन्होंने किताब लिखवाई अजीज बर्नी से कि 26/11 ये साजिश है आरएसएस की। तो महोदय, हमारे जो तीर्थ स्थल, इकोनॉमिक केंद्र दिल्ली, सबको आतंकवाद इसलिए बनाया गया, निवेश ना आए, एडवाइजरी जारी हुई, भारत मत जाओ, क्योंकि असुरक्षित देश है। महोदय, जब से मोदी जी आए हैं, 0 टॉलरेंस है, कहीं ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, आतंकवादियों की हालत खराब है, और जब आज शांति सुरक्षा है इस देश में, तो निवेश आ रहे हैं, और वही कारण है हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। महोदय, अपने स्टेट की बात करता हूं, 10 साल विरोधियों की सरकारें रही 2017 के पहले, और ये हालत था लूट मार अपहरण, रोज दंगे, कि ये होता हालत कि वहां निवेश नहीं आता था। वहां के मुख्यमंत्री जी दिल्ली और बॉम्बे में करते थे। अभी पिछले साल योगी जी ने जो किया निवेश सम्मेलन, महोदय, 36 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आया, और उसका कारण है वहां की कानून व्यवस्था। तो महोदय, नक्सल में कहना है, क्योंकि देश की कानून व्यवस्था धन्यवाद बिजलाल जी, इसलिए विदेश के लोग आकर्षित होते हैं, और इसलिए हमारी डॉक्टर एल हनुमंतैया है वो दिन दुनी। Sir, my time. Sir, thank you very much for giving me this opportunity on discussion on the economic situation in the country. Sir, one thing that fits this government is do work for a teaspoonful, talk for a gallon. And also in this government, sir, the Modi government development model, which has been told by many people, the poor forced to eat less while the rich make merry. That is the situation in the last 10 years of the administration. Sir, in 2023, the Indian economy is facing high inflation and income inequality. The high inflation is not the product of market forces alone, but the governmental interventions that prioritize one section over the another section. Sir, while the reduction is, particularly the LPG reduction, is a drop in the ocean, it does not provide any example, but lakhs of people, the families, are still suffering. So persistently, high inflation has been a constant alongside high unemployment and tepid growth, sir. Sir, I just give some figures of the UPA government and this government for the last 10 years. So the major difference between the UPA government and this government, the net foreign direct investment, it is the difference between the investments made by foreign entities in India and investments made by Indian entities in the foreign countries. Sir, during 2003 and 4 and 13-14, it was 1,087 for 6%. After the percentage of change during Modi ji's government, that is 2013-14 to 22 and 23, it is 462.2%.
Sir, whereas the gross domestic product, it is the market value of the final goods and services produced in the year by a country. That is the gross domestic product. Sir, it was 302.3% during UPA government, and now it is 142.5%. You can see the difference. Sir, in real gross domestic product, which is very important, it is the total value of the final goods and services produced within the country in a Hanumantaji, year please adjusted for conclude. inflation. Please conclude. Sir, Please conclude. I have not yet started, sir. Your time is up. Then why should you call me? 3 minutes have been I given. was told I will be given 10 minutes. 3 minutes were given to you, sir. 3 minutes. I would not have taken it. Kindly conclude. Then no point in continuing, sir. Thank you very much. Shri Sakaldeep Rajbharji. So please conclude. Please conclude. Please conclude. माननीय उपसभापति महोदय Please जी, conclude. आपने भारत की आर्थिक नीति पर बोलने का अवसर दिया, इसके Sir, लिए let him conclude. आपका दिल से Rajbharji, उनको conclude करें. Please conclude. And conclude this. Sir, there are two important things which I wanted to tell. The rich getting richer and the poor getting poorer is the major characteristics of this economy which is now running in the country. That is because, sir, 5% Indians now own 60% of the country's wealth, and whereas the bottom 50% of Indians own only 3% of the wealth. That is a very, very important issue, sir. Sir, the absolute number of poor in India has risen by 76 million. From 217 million in 1213, it is 283 million in 1920 in rural areas, and from 53 million to 63 million in urban areas. Sir, this is a very important factor that whenever we talk about rich and poor, this is the statistics. Sir, I just want to bring it to your notice, sir, the bank loan write-offs. Sir, banks have written off loans worth 14.56 lakh crore since 14-15. In the last financial year alone, it is 2.09 lakh crore were written off. But when the questions were asked in the parliament, the answers were different. Sir, now I know the finance minister may say that the loans written off and there are procedure and recover such loans, and write-off is not the same as waive off. That is what the answer we got. But sir, we look at the data, we see that devil in the details. Out of these total loans waived off, sir, 14% have been recovered. And this is not my data. Please conclude, sir. Or anybody's data. This is the government's data. The Standing Committee of Finance has given this data. 1.03 lakh crore were Thank you, recovered Hanumantaji. from Thank you. 7.35 lakh crore. Shri Sakaldeep Then what is Rajbharji. the amount, sir? So I just, sir, put it before you. माननीय उपसभापति महोदय जी, आपने भारत की आर्थिक नीति पर Sir, बोलने it's का not अवसर going दिया, on record, sir. इसके It's लिए not going on record. आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय महोदय जी, आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक क्षेत्र में दिन दूना रात चौगुना प्रगति के पथ पर है। 2025 तक भारत 5 ट्रिलियन लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व और बढ़ते आर्थिक स्रोत का यह परिणाम है कि आज भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का जाल बिछ गया है। इसके लिए इस विभाग के माननीय मंत्री श्री गडकरी जी को भी दिल से बधाई देता हूं। रेलवे के क्षेत्र में हम प्रगति की ओर अग्रसर हैं। 2 सालों के अंदर पूरे देश में बुलेट ट्रेनें चलने लगेगी। सभी प्रदेशों में एम्स खुलता जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। देश में आईआईटी, इंजीनियरिंग, आईआईएम नए खुल रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में उच्च शिक्षा का प्रावधान है।
पूरे देश में हर घर में बिजली, हर घर नल से जल और गैस सिलेंडर, आवास, शौचालय, पेंशन सब गरीबों को दिया जा रहा है। यह सब प्रगति जो है आर्थिक नीति कुशल हाथों में होने के कारण है। आज हमारे देश के जीडीपी दुनिया के तमाम मुल्कों से आगे 8.2 पर है। कृषि के क्षेत्र में भी किसानों का आय बढ़ा है और हमारा देश अन्न के मामलों में आत्मनिर्भर है। पिछले दिनों 2020 से 2021 में कोरोना काल में भी हमारे देश का आर्थिक विकास थोड़ा धीमा हुआ था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रगति कर रहे हैं और आज हमारी आर्थिक विकास दुनिया के तमाम मुल्कों से भी आगे चल रहा है। भारतीय वित्त बाजार में विदेशी संस्थाओं को अनुमति दी गई है, विदेशी व्यापार को बढ़ाया गया है, आयात निर्यात में छूट दी गई है। इसके अलावा विस्तारीकरण नीति के तहत कृषि सुधार और श्रम सुधारों पर भी विशेष लोन दिया जा रहा है। सुरक्षा के क्षेत्र में हम काफी मजबूत स्थिति में हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हम चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव तक पहुंच चुके हैं। इस क्षेत्र में हमारा देश पहले स्थान पर है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 45% से घटकर 22% पहुंच गई है। जल्द ही पूरी आबादी खुशहाली के लाइन में खड़ी दिखेगी। अर्थव्यवस्था में संपूर्ण सुधार के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कृत संकल्प हैं और देश की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी के गारंटी पर पूर्ण विश्वास है। देश की जनता भारी बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः ताजपोशी के लिए तैयार खड़ी है। इसलिए मैं अपने देश की जनता के तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोट कोट बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्री सदानंद शेतावड़े। Thank you, Chairman Sir, for giving me opportunity to speak on important topic, economic situation in the country. As I stand to appreciate and acknowledge the dynamic strides our Bharat has made in terms of current economic outlook, I also take this opportunity to congratulate our beloved Prime Minister Modi ji and Honorable Member of this House, J.P. Nadda ji, for gaining a decisive mandate in Northern India. The thumping victors in some India's largest states like Rajasthan, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh is not only an appreciative stamp on Modi ji's guarantee of all-inclusive social and massive infrastructure sector development in those states, but it also reflects the trust the common people have placed on India's growing economic outlook. Thanks to dynamic leadership of Modi ji and the more particular efforts made by Honorable Finance Minister Nirmala ji and Honorable Minister Piyush Goyal ji. Sir, as we celebrate Bharat's changing face and image, I am more thrilled at what is in store for all of us concerning digitization, exports, industry growth, and the economic outlook. Modi ji's dream to transform India into a digital economy has gotten good results. As India aims for $10 trillion economy by the early next decade, this growth will be propelled by digitization, revolutionizing every segment of the economy. The digital revolution to contribute 20% of the GDP over the next 4 years, and the digital economy will play a pivotal role in narrowing the gap between rural and urban areas. Similar has been the success of Modi ji's ambitious Startup India mission. Startup innovation and institutional research have received a big boost in the changing Bharat. With tech startup taking the lead, Bharat has the third largest startup ecosystem, creating close to a million jobs since 2017. The total number of tech startups in Bharat is estimated to grow almost 3 times from 68,000 in 2023 to 180,000 in 2030. Thanks to my party and my senior leaders in the government, Bharat has now thriving IT industry that is a major contributor to the country's GDP, employment, and exports. It also excites me to state that Bharat investment inflation ratio
is at lowest, making it easy to expand and diversify the businesses, and the GDP growth is above expectation. I would like to remind the August House that Bharat GDP growth has far exceeded the negative outlook projected by textbook economists like Raghuraman Rajan sitting in the AC chambers. Bharat economy is poised to grow over 6% in the financial year 2024, ranking among the world's fastest growing economies, much higher than China. And this may be piece of bad news for China lovers in Indian politics. Bharat GDP is expected to grow 6.4% to 6.8% this fiscal year, accelerating to 7% by 2026. In contrast, China's economic growth is projected to slow to 4.6% by 2026. I welcome the recent report by Global Credit Outlook 2024. New risk, new playbook, documented by S&P Global Ratings, and Bharat is set to become the third largest economy by 2030 and is expected to be the fastest growing major economy in the next 3 years. Currently, Bharat population has one of the best ratio between its working age population and its number of children and elderly. With the all right indicators at our right, Bharat is now becoming a gateway for setting up global manufacturing capacity, continuing to grow services and industry alongside the growth of infrastructure. Thanks to the resilient quality of the Indian industry, under the leadership of global leaders like Modi ji, for doing all that is required and all that is good for the industry and the economy. I am certain that the momentum for growth will further grow with the historical blessing in the form of popular vote for Modi ji and our glorious regime since 2014 and the year 2024 beyond. Thank you, Chairman, sir. Thank you. श्री अजय प्रताप सिंह, टाइम कितना है सर? 3 minutes. माननीय सभापति महोदय, भारत की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में चर्चा चल रही है। 3 मिनट का समय बहुत कम है और 3 मिनट के समय के साथ विषय के साथ न्याय करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। भारत की आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंबित करते हुए इस सदन के हमारे अनेक साथियों ने पक्ष और विपक्ष में आंकड़े प्रस्तुत किए। इस पक्ष से आंकड़े प्रस्तुत करके बताया गया कि आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, उस पक्ष से आंकड़े प्रस्तुत करके बताया गया कि आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। हमारे वरिष्ठ साथी आज सदन में नहीं है, राम गोपाल जी ने कहा कि इन आंकड़ों का बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भी उनकी राय का हूं कि इन आंकड़ों का बहुत भरोसा नहीं करता, तो फिर भारत की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान कैसे लगाएं? तो मेरा उत्तर है कि भारत की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान लगाने के लिए और किसी से नहीं पूछें, चलिए कलावती से पूछ लेते हैं। कलावती कौन है? कलावती वो महिला है जो उत्तर प्रदेश में रहती थी। कलावती के घर में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष गए थे। कलावती की खाट में बैठकर उन्होंने भोजन किया था। कलावती की झोपड़ी में वो घंटे 2 घंटे रुके थे। कलावती के माध्यम से उन्होंने भारत की गरीबी को जानने का प्रयास किया था, भारत की भूख को जानने का प्रयास किया था, गरीबों की जो आवश्यकताएं हैं उनको जानने का प्रयास किया था। और उसके बाद पूरे देश के गरीबों में एक आशा जागृत हुई थी कि कांग्रेस पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब के झोपड़ी में पहुंच रहे हैं, गरीब को जानने का प्रयास कर रहे हैं, गरीब की आवश्यकताओं को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से गरीबों के जीवन में परिवर्तन कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा आया है, लेकिन उस झोपड़ी से जाने के पश्चात कलावती भी निराश हुई और भारत का गरीब भी निराश हुआ। कलावती के जीवन में अगर रोशनी आई, भारत के गरीबों के जीवन में रोशनी आई, तो सन 2014 के पश्चात जब इस देश की बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाली, कलावती जी को पक्का मकान दिया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। कलावती के घर में अगर उज्ज्वला गैस आई तो नरेंद्र मोदी की सरकार के काल में आई। कलावती की झोपड़ी में अगर बिजली आई
तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में आई। कलावती को अगर पानी पीने की व्यवस्था उपलब्ध हुई तो कलावती तो नरेंद्र मोदी जी के जमाने में उपलब्ध हुई। यानी कि कलावती के जीवन में जो परिवर्तन आया, जिसको हम सुख कहते हैं, जिसको हम समृद्धि का आधार कहते हैं, जिसको हम प्रगति का मानक मानते हैं, अगर वो कलावती को प्राप्त हुआ है तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर भारत की आर्थिक समृद्धि का आकलन करना है तो कलावती से पूछ लीजिए। कलावती आज इस विषय पर सबसे उपयुक्त और सबसे सही जज है जो भारत की आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। हमारे एक साथी हैं इस सदन के, उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। एक तरफ मुफ्त अनाज दिया जा रहा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है। 1 मिनट और समय लूंगा मैं सभापति महोदय कि ये जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है तो वो उन लोगों पर कृपा नहीं किया जा रहा है। याद रखना चाहिए कि भारत की सरकार एक लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के जो भी वित्तीय उत्पाद हैं उसका समान रूप से वितरण हो। और समान रूप से वितरण करने के लिए जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है ये एक माध्यम है। अगर गरीबों को हमने पक्का मकान दिया है, गरीबों को अगर हमने बिजली दिया है, गरीबों को अगर हमने पानी पीने की व्यवस्था किया है, गरीबों को अगर हमने पक्की सड़क दिया है, गरीबों को अगर हमने नेशनल हाईवे दिया है, गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए सारी सुख सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई है, तो एक लोक कल्याणकारी राज्य के कारण किया है। और इसके माध्यम से भारत के जीवन में जो परिवर्तन आया है, भारत की आर्थिक स्थिति, अभी आज ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस दीपावली में जो हमारे यहाँ व्यापार हुआ है भारत में, तो 4.5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है। और ये जो आंतरिक व्यापार हुआ है दीपावली के दिन में, तो 4.5 लाख करोड़ का व्यापार पहली बार हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि भारत के जीवन में समृद्धि आई, भारतवासियों के जेब में पैसा आया है, इसलिए वो बाजार जा सके, इसलिए वो अपने बच्चों की अभिलाषा पूरी कर सके, इसलिए वो दीपावली पूजन अच्छी तरीके से कर सके, इसलिए वो मिठाई ला सके, इसलिए वो पटाखे ला सके, इसलिए वो दिए ला सके। तो ये जो मानक मैंने कलावती के माध्यम से, दीपावली के माध्यम से, खाद्यान्न योजना के माध्यम से बताया है, और अगर आप इसको स्वीकार करते हैं, अगर ये आपको दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत की स्थिति अच्छी हुई है, बेहतर हुई है, और भारत का भविष्य भी उज्जवल है। भारत ठीक रास्ते पे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इतना निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर डीपी वत्स। थैंक यू सभापति जी। आपको देख के तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हरियाणा की बात कर लें। वैसे मैं 2 दिन से सुन रहा हूं, अगर अपोजिशन बेंचेस की सुने तो ऐसे लगता है स्थिति कुछ अलग है, मगर इंटरनेशनल एजेंसीज और ट्रेजरी बेंचेस और एक्चुअल देखें तो हिंदुस्तान मोदी जी की क़यादत में इतना बड़ा एक गढ़ा पार करके, यानी कि कोविड और अब दुनिया में 2 जगह जंग चली हुई है, ऐसे हालात में भी हमारी सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, तो ये एक फख्र की बात है। बट आई विल स्पीक फ्रॉम ए सोल्जर्स एंगल। पहले भी भारत सोने की चिड़िया रहा था, सोमनाथ सोने की चिड़िया था, मगर लुटेरा गजनी लूट के ले गया। उससे पहले भी हिंदुस्तान पे हमले होते रहे क्योंकि हमारा डिफेंस मजबूत नहीं था और साइंटिफिक नहीं था। तो मैं डिफेंस की बात जरूर करूंगा कि हमारी ये सोने की चिड़िया की तरफ, जगत गुरु की तरफ जो हिंदुस्तान पेशकदमी कर रहा है, उसमें हम मोदी जी के सुरक्षित हाथों में कितने महफूज हैं। 2013 में डिफेंस बजट था 2.5 लाख करोड़, आज के दिन डिफेंस बजट है 6 लाख करोड़। और इतना ही नहीं, आज के दिन
हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाते हैं, चंद्रयान को भी लैंड करते हैं दक्षिणी ध्रुव, चांद के दक्षिणी ध्रुव पे, जो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। हम अग्नि 5 भी बनाते हैं जिसकी रेंज में पूरा संसार आ जाता है। और मोदी जी तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में बैठ के ही वॉज लुकिंग एज फिट एज ए फाइटर पायलट। ये भी बड़ी फख्र की बात है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वैसे तो माननीय गृह मंत्री जी ने कल बताया था लोकसभा में कि 2 बहुत बड़ी गलतियां हुई। कुछ ऐसे भी दौर देखे हैं इतिहास के पन्नों ने, लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। 2 गलतियां तो कश्मीर पूरा नहीं छुड़वाया और यूएन में सीज फायर के लिए चले गए। इस पे तो काफी डिस्कशन हुआ, मगर मैं कहता हूं 4 गलतियां नेहरूवियन लीगेसीज टू दिस कंट्री, यानी पार्टीशन ऑफ द कंट्री फॉर द पर्सनल एम्बिशन ऑफ जिन्ना एंड नेहरू, यानी कि देश का विविसेक्शन हुआ, 30 लाख मारे गए, करोड़ों माइग्रेट हुए। और फिर उस वक्त के तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के रोकने के बावजूद भी हिंदी चीनी भाई भाई एंड स्मिटन बाई सोशलिज्म से उन्होंने बगैर कोई बाउंड्री धारण किए तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। ऐसी स्थिति आ गई कि आज के दिन ये स्वरूप युद्ध चेंज कर गया और हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है, सो कॉल्ड आजादी वाज इन फैक्ट टू बिगिन विद वाज बर्बादी। और हम इसलिए 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाते हैं, पाकिस्तान डे। उसके बाद हिंदुस्तान पूरी तरह से युद्धरत है और युद्ध अपना स्वरूप चेंज कर गया है। ऐसे हालात में हमारी एग्रेसिव डिफेंस, यानी अब हम दुश्मन पे सर चढ़ के बात करते हैं। एक दफा रक्षा मंत्री ने कहा था कि चाइना बॉर्डर पे हम सड़कें, सुरंगें, टनल विकसित इसलिए नहीं करते कि उनके आने के लिए आसान रास्ता हो जाएगा चाइनीज के लिए। आज हमारा सिपाही उनके सर पे ओवरलुक करता है और बड़ी सुपीरियोरिटी के साथ हम डोमिनेट करते हैं। इसी तरह से एक बहुत लंबी लिस्ट है, मगर क्योंकि आपने घंटी बजा दी, मैं सोल्जर हूं, तो मैं ये कहूंगा कि हर एक फ्रंट पे डॉक्टर हूं, थोड़ी सी डॉक्टरी की बात भी कर लूं कि हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हैं। 2.2 बिलियन को हमने वैक्सीनेशन दिया और वैक्सीनेशन के भी हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। लगता ऐसे है कि तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट के आएगा और भारत की गौरव गाथा को नरेंद्र मोदी दोहराएगा, ये हिंदुस्तान दोहराएगा। जय हरियाणा, जय हिंद। धन्यवाद। डॉक्टर अशोक वाजपेयी। माननीय उपसभापति महोदय, देश की आर्थिक स्थिति के संबंध में चर्चा करने का आपने अवसर दिया, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। महोदय, अगर देश की आज़ादी के बाद 2014 से 2023 तक का ये दशक अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, हर दृष्टि में ये दशक जो है एक स्वर्णिम काल माना जाएगा भारतवर्ष का। हर क्षेत्र में इन 10 वर्षों में, इन 9.5 वर्षों में देश ने प्रगति की है। अगर आप चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे सामरिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, हर क्षेत्र में ये देश आगे बढ़ा है और इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता। हमारे विपक्ष के बैठे मित्रों ने भले ही तमाम आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया हो, लेकिन उनकी अंतरात्मा भी इस बात को समझती है कि इन 10 वर्षों में जिस तेजी के साथ देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है वो अकल्पनीय है और इन लोगों ने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि देश इतनी तेजी के साथ प्रगति कर सकता है। जबकि इन 10 वर्षों में देश ने कोरोना जैसी महामारी को भी झेला, 2 बड़े युद्ध हो रहे हैं 2 देशों के,
और उनके चलते तमाम सारी दुनिया के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था भी घुटनों पर आ गई, लेकिन उसके बाद भी ये देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में भी समाज के प्रति जो दायित्व है सरकार का, उसका भी जिस तेजी के साथ निर्वहन कर रहा है, इन तमाम सारी चुनौतियों के बाद भी देश आगे भी बढ़ रहा है, सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं ये दशक है, ये स्वर्णिम काल होगा देश के आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की दृष्टि से ये 10 वर्ष बहुत ही मूल्यवान होंगे। मान्यवर, आप देखें जिस तरीके से आज देश, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने स्वावलंबन का नारा दिया, तो आज हर क्षेत्र में, यहां तक खिलौने तक जो विदेशों से आयात हुआ करते थे, चाइना से करोड़ों रुपए के खिलौने आते थे, आज देश में खिलौना उद्योग भी इतनी तेजी के साथ बढ़ा। दीपावली में विदेशों से आने वाली तमाम वो झालर और वो बिजली की रोशनी, वो सारी जो करोड़ों रुपए की आयात हम करते थे, देश ने मोदी जी के आह्वान पर देश ने स्वयं उन सारी चीजों का निर्माण करना प्रारंभ किया और जिससे कि हम बड़े सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे हम स्वावलंबन की ओर बढ़े हैं। आप देखें मान्यवर, 1 लाख करोड़ से ज्यादा रक्षा उत्पाद जिनको कि हम आयात करते थे दूसरे देशों से, उन रक्षा उत्पादों को हमने देश के अंदर बनाने का काम किया, इंडिजिनस। और आज इतना ही नहीं, हवाई जहाज से लेकर प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर भी हमारा HAL बनाने का काम कर रहा है। तो आज मैं देखो औद्योगिक दृष्टि से देश कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। और ऐसा नहीं कि हमारे तेजस विमान का लोहा आज सारी दुनिया मान रही है कि जिस तेजी के साथ हमने तेजस विमान और प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर बना करके दुनिया को दिखाने का काम किया है कि भारत हर देश, हर क्षेत्र में सक्षम है। आप जैसे देखें चंद्रयान पर जितनी सफलता के साथ हमने लैंड किया और उसके बाद जो आज सारी दुनिया के सामने है कि हमने हर क्षेत्र में अपनी प्रगति को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज इस बात से सभी लोग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का, ये मान्यवर कोई छोटा दायित्व तो नहीं था। कोरोना जैसी महामारी में तमाम गरीबों के रोजगार चले गए थे, जो मजदूरी करते थे उनके रोजगार चले गए, लोगों के सामने खाद्यान्न का संकट था। ऐसे में हमारी सरकार ने, यशस्वी नेता माननीय मोदी जी ने कहा, देश के उन गरीबों के लिए 80 करोड़ लोगों को हम निःशुल्क राशन देने का काम करेंगे। और जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई 2020 से आने वाले 2028 तक के लिए इसे सुनिश्चित कर दिया गया कि निःशुल्क राशन हम गरीबों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। 80 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होने का काम करेंगे। मान्यवर, गरीब बीमार हो जाता था, इलाज नहीं हो पाता था, उसके पास पैसा नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाकर 5 लाख तक का इलाज हर गरीब का निःशुल्क की व्यवस्था कर दी। उससे गरीबों के जीवन में भी रोशनी आई। गंभीर बीमारी, चाहे हृदय रोग की हो, किडनी की हो या कोई और गंभीर बीमारी, उनका इलाज गरीब आदमी नहीं करा पाता था। आज सभी अस्पतालों में उनके लिए आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था। हम स्वच्छता की बात करते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता का नारा दिया, देश में एक नई क्रांति आई है। और आज अगर आप देखें सामाजिक जीवन में भी स्वच्छता का कितना बड़ा महत्व है और कितनी तेजी के साथ देश ने उसे अंगीकार करने का काम किया है। 12 करोड़ से ज्यादा स्वच्छ शौचालय बनाकर हमारी महिलाओं की इज्जत और उनके सम्मान को बढ़ाने का काम किया, इज्जत घर का रूप देने का काम किया। उज्ज्वला गैस के माध्यम से 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को निःशुल्क उज्ज्वला गैस दे करके, जो वो धुएं से खाना बनाती थी, गीली लकड़ी से खाना बनाती, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। करोड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास बनाकर मानवर गरीब को भी पक्की छत देने का काम किया। जेनेरिक दवाओं के माध्यम से दवाओं की कीमत इतने बड़े पैमाने पे कम की कि आज जो दवाएं बाजार में 100 रुपए में मिला करती थी, जेनेरिक स्टोर पर 10 रुपए 15 रुपए वो दवाएं मिलती हैं। और हजारों की संख्या में जेनेरिक स्टोर बनाकर गरीबों को भी अच्छी दवाएं उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखें, किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों को निरंतर सब्सिडी देने का, उनको सम्मान राशि देने का काम किया है। और इतना ही नहीं, यूरिया हो, DAP हो, NPK हो, सारे जो हमारे कृषि के जो भी खाद थी, फर्टिलाइजर थे, उनके ऊपर एक बड़ी छूट देने का काम सरकार ने किया। और यहां तक कि 20% ही उनसे लिया जाता, 80% सरकार सब्सिडी देती है, जिससे किसान के ऊपर कोई अतिरिक्त भार न आने पाए। पूरे देश को नल से जल पहुंचाने का काम किया
और उसके बाद भी आज हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने की बात करते हैं। आप जिधर दृष्टि डालेंगे उधर आपको लगेगा इन 9.5 वर्षों में विकास ही विकास दिखाई देता है। मान्यवर, चाहे नेशनल हाईवेज का निर्माण हो, जहां इनके समय में 8 से 10 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनती थी, आज 40 किलोमीटर पर डे से ज्यादा हाईवेज का निर्माण हो रहा है। इतनी तेजी के साथ हाईवेज का निर्माण हो रहा है। रेलवे के क्षेत्र में देखें एक नई क्रांति आई है। सारे देश के रेलवे स्टेशनों का उन्नयन हो रहा है, उनका उच्चीकरण हो रहा है। नई नई ट्रेनें आ रही हैं, कहीं वंदे भारत ट्रेन आ रही, कहीं रैपिड रेल आ रही है, मान्यवर कहीं पर जो है बुलेट ट्रेन आ रही है, शहरों के अंदर चलने के लिए मेट्रो ट्रेन आ रही। ये क्रांति आपको दिखाई नहीं पड़ती क्या? बिना आर्थिक समृद्धि के एक क्रांति हो सकती थी? आप स्वयं अपने दिल पर हाथ रख करके देखें कि इन 9 वर्षों के अंदर जो देश ने तरक्की की है वो कोई सामान्य तरक्की नहीं है, और ये तभी संभव थी कि आर्थिक दृष्टि से हम समृद्ध होते। और आज दुनिया के जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उन सब ने इस बात को माना है कि भारत बहुत तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और ये अपेक्षा की है आने वाले दिनों में जो आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले पंचवर्षीय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। क्योंकि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जिस नेतृत्व ने सारी आज केवल देश को ही नहीं दुनिया को दिशा देने का काम कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में देखें मान्यवर किस तेजी के साथ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, और इन विपरीत परिस्थितियों में भी, जब सारी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई है उसके बाद भी हमने देश की अर्थव्यवस्था को कहीं भी डगमगाने नहीं दिया है। ये हमारे देश के कुशल नेतृत्व का ही प्रभाव है कि जिसके चलते हम तमाम सारे इन विकास के कार्यों को भी कर सकें। मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें नए नए आयुर्विज्ञान संस्थान खुल रहे हैं। आज पूरे देश में आप एक एक राज्य में 2-2 आयुर्विज्ञान संस्थान बन रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आयुष के क्षेत्र में भी बड़ी तेजी के साथ प्रगति हो रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी सुविधाएं जनमानस को देने का काम इस सरकार में हुआ है वो अपने में भी एक उदाहरण है। मान्यवर आप देखें इतने मेडिकल कॉलेज कभी नहीं बने थे, और जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं होंगे हमारे पास डॉक्टर नहीं होंगे, और 140 करोड़ की आबादी के स्वास्थ्य के लिए हमको चाहिए होंगे योग्य चिकित्सक, और उन योग्य चिकित्सकों को बनाने के लिए मोदी सरकार में ये लक्ष्य रखा गया है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा और हमारे बच्चे वहां से पढ़ के निकलेंगे, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम करेंगे। मान्यवर इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में आज देखें नए नए विश्वविद्यालयों का निर्माण हो रहा है, महाविद्यालयों का निर्माण हो रहा है। नई शिक्षा नीति लाकर सरकार ने एक देश को नई दिशा देने का काम किया है। मातृभाषा को लेकर के भी सरकार ने जो प्राथमिकता दर्शाने का काम किया है, भारतीय भाषाओं में शिक्षा हो, ये पहली बार हमारी सरकार ने आजादी के बाद इसको प्राथमिकता देने का काम किया है। मानवर इतना ही नहीं, आज एयरपोर्ट देखें 70 से ज्यादा नए एयरपोर्ट बनकर तैयार हुए हैं, और जिन पर की आज जो उड़ान योजना के अंतर्गत सामान्य जन भी हवाई यात्रा करने में सक्षम हो सका है। ये बिना देश की आर्थिक समृद्धि के संभव नहीं हो सकता था। तो मान्यवर आज दुनिया में देखें और कहीं भी किसी भी देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए सामरिक मजबूती बहुत आवश्यक है। मान्यवर जैसा अभी जनरल वत्स जी कह रहे थे, हमने सामरिक दृष्टि से भी देश को समृद्ध बनाने का काम किया है। हमारी सेना के पास उनके आयुध भंडारों में कोई कमी न हो, हर तरह से सेना सक्षम हो। ताकि हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकें। इसलिए आज हमारे आयुध भंडार भरे पड़े हैं तमाम उन उपकरणों से जिससे कि दुनिया से बड़ी से बड़ी ताकत का हम मुकाबला कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि आजादी के ये 9.5 वर्ष जो माननीय मोदी जी के ये स्वर्णिम काल के रूप में देखे जाएंगे, हर क्षेत्र में देश ने प्रगति की है, और आर्थिक दृष्टि से जिस तरह से देश समृद्ध हुआ है वो किसी से छिपा नहीं। केवल हमारे विपक्ष के मित्र अपनी झेप मिटाने के लिए अनर्गल आंकड़े इकट्ठा करके पेश करने का काम कर रहे हैं। ये सारी दुनिया इस बात को जानती है, और मान्यवर इसका सबसे बड़ा पैमाना है देश की 140 करोड़ जनता जब भी जनादेश होता है हमारी सरकार के पक्ष में आता है, क्योंकि जनता को विश्वास है कि माननीय मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, देश तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए,
भारतीय जनता पार्टी जो अखंड जीतती है, ये माननीय मोदी जी के प्रति और इस सरकार के प्रति जनता का विश्वास ही है कि जो हमारे प्रयासों से संतुष्ट है। सबका प्रयास, सबका विकास और ये जिस नारे के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, आपने हमें अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री रामचंद्र जांगड़ा जी। सभापति जी, आपने मुझे भारत की आर्थिक स्थिति पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मान्यवर, परसों से इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। भारत वास्तव में सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया बनने के रास्ते के ऊपर है। इस देश में बाबर से पहले जितने भी हमलावर आए, भारत से लाखों मन सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ लूट कर लिए गए, फिर भी ये देश सोने की चिड़िया बना रहा। लेकिन अंग्रेजों ने न देश की संपत्ति को लूटा बल्कि देश की संपत्ति के साधनों को भी लूटा। और अगर उसकी वास्तविक तस्वीर देखनी है तो कोई भी भाई प्रेमचंद का साहित्य पढ़ सकता है, उससे भारत की असली तस्वीर का अंदाजा लग जाएगा, जो अंग्रेजों ने जिस स्थिति में लाके भारत को खड़ा कर दिया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आजादी के बाद भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए थी। हमारे देश के शहीदों ने, सरदार भगत सिंह ने, सुखदेव सिंह ने, शहीद बिस्मिल्लाह अशफाकुल्लाह ने, शहीद चंद्रशेखर ने, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने, खुदीराम बोस ने किस लिए गोलियां खाई थी, किस लिए फांसी का फंदा चूमा था, किस भारत की कल्पना की थी, किस भारत की तस्वीर सामने रखकर वीर सावरकर ने सेलुलर जेल के अंदर यातनाएं सही थी, और किस भारत की कल्पना करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने हजारों आजाद हिंद सैनिकों के साथ प्राणों की आहुति दी थी। वो भारत कौन सा भारत होना चाहिए था, उसकी आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिए थी, हमारे सामने सवाल ये है। अभी जनरल वत्स जी युद्ध की चर्चा कर रहे थे। चाइना वार के समय में हमारे सैनिकों के पास क्या था? एक 303 की राइफल और 50 कारतूस, इसके सिवाय कोई एमिनेशन नहीं था। रेजांगला के अंदर जो हमारे सैनिकों ने शहादत दी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में, उन सैनिकों की डेड बॉडी को भी देख के किसी का भी हृदय कांप सकता था कि किस स्थिति में उन्होंने वो युद्ध लड़ा था। क्या था उनके पास? ना जूते थे, ना कपड़े थे, ना हथियार थे, ना कुछ नहीं था। आज भारत के पास राफेल है, आज भारत के पास तेजस विमान है, आज भारत के पास प्रचंड हेलीकॉप्टर है, आज भारत रक्षा उपकरणों का ना आयात बंद कर दिया है बल्कि निर्यात शुरू कर दिया है। आज भारत लाखों करोड़, हजारों करोड़ का रक्षा उत्पादन करके विदेशों को निर्यात कर रहा है। आज भारत की आर्थिक स्थिति ये है। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरे साथी विपक्ष के कई बार चर्चा कर रहे थे कि 2014 के बाद की बात क्यों करते हैं, 2015-14 से पहले की बात क्यों नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता इतने कंजूस और इतने छोटे दिल के नहीं हैं। सरदेव वाजपेयी जी ने कहा था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। सरदेव प्रधानमंत्री जी कई बार नरसिम्हा राव जी की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा कर चुके हैं, अपने शब्दों में कर चुके हैं, कोई कंजूसी नहीं बरती है। लेकिन मैं बात करता हूं 1998 में वाजपेयी जी के आने से पहले की। मैं किसानों की चर्चा की बात करता हूं। भारत के किसान को कोऑपरेटिव लोन 10,000 रुपये 24% ब्याज के ऊपर मिलता था, और अगर 500 रुपये किसी किसान की किस्त टूट जाती तो उसको तहसील के हवालात में बंद कर दिया जाता था। गुंडों के लिए, अपराधियों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून था। उनको 24 घंटे में बताना पड़ता था कि आपको किस अपराध में यहां पर बंद किया गया है। लेकिन किसान के लिए कोई कानून नहीं था। जब तक वो 500 रुपए की किस्त ना भर दे तब तक महीनों तक तहसील के हवालात में जिल्लत की जिंदगी जीते हुए किसान को रहना पड़ता था। इस किसान को अपमान से किसने पीछा छुड़वाया? वाजपेयी जी की सरकार आई, सरदेव राजनाथ जी कृषि मंत्री थे, किसान क्रेडिट कार्ड बना के जो 24% ब्याज का जो रेट था उसको 7% के ऊपर लेके आए और किसान को तहसील के हवालात की जिल्लत की जिंदगी से मुक्ति दिलवा दी। ये किसने किया? याद करने की चीजें हैं। और आज किसान को 0% के ऊपर मोदी जी की नीतियों की वजह से लोन मिल रहा है। जो किसान 10 रुपए अगर किसी पड़ोसी की लड़की को कन्यादान देना पड़ता तो महाजन की बही में को अंगूठा लगा के आता था, वो किसान आज
15 लाख रुपए का ट्रैक्टर लेने के लिए अगर जाता है एजेंसी में तो कहता है नगद लूंगा, बताइए डिस्काउंट कितना देना है। आज किसान की आर्थिक स्थिति ये है। आप कल्पना करिए कि इस समय देश के अंदर हमारे घरों की स्थिति क्या है। हरियाणा की चर्चा कर रहे थे जनरल साहब, इन्होंने पूरी बात नहीं बताई। हरियाणा सरकार एक ओलंपिक मेडल विजेता को 6 करोड़ रुपया इनाम में देती है, 6 करोड़ रुपया गोल्ड मेडलिस्ट को, और 4.5 करोड़ रुपया सिल्वर मेडलिस्ट को देती है, और 2.5 करोड़ रुपया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को देती है। और अगर कोई खिलाड़ी कोई मेडल नहीं जीत पाता, केवल मात्र ओलंपिक में पार्टिसिपेशन कर लेता है, तो उसको भी सरकार 25 लाख रुपए इनाम देती है। कहां पर है ये? कांग्रेस के लोग मुझे बताएं कि किस खिलाड़ी को कहां कब इनाम दिया गया था। तो मैं मान्यवर हरियाणवी एक थोड़ा सा मेरे ऊपर आप इतनी तो कर देंगे, मेरे थोड़ी सी मैं बात की अपनी चर्चा करूं तो मैं अभी युद्ध की चर्चा हो रही थी, सैनिकों को सम्मान किसने दिया? कारगिल के वार से पहले इस देश के सैनिक अगर अपनी शहादत देते तो उसके घर में क्या आता था? एक उसकी टोपी और एक उसकी बेल्ट या तार आ जाता था कि आपका बेटा वहां पर शहीद हो गया। वो तो डेड बॉडी का भी मुंह नहीं देख पाते थे। ये सैनिकों को सम्मान के साथ उनकी डेड बॉडी को वहां पर लाया गया और तोपों की सलामी, बंदूकों की सलामी के साथ गांव के शमशान घाट में उनका दाह संस्कार किया गया। और एजेंसी, क्या कभी कांग्रेस को याद आया कि हमारे देश की सैनिक विधवाएं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के लिए, जो इतनी विकट परिस्थितियों में लड़ाई लड़ते हुए विदेशियों से अपना प्राणों की आहुति दे दी, उसके बाद उनका गुजारा कैसे होगा? ये बात और किसी को याद क्यों नहीं आई? ये वाजपेयी के समय के बाद भाजपा शासन में याद क्यों आई? अभी मैं आंकड़ों की बात नहीं करता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं। आज हमारे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था देखिए, आज हमारे कॉलेजेस की व्यवस्था देखिए, आज हमारे यूनिवर्सिटीज की व्यवस्था देखिए, आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों की व्यवस्था देखिए, आज वंदे भारत ट्रेन की व्यवस्था देखिए, हवाई अड्डों की व्यवस्था देखिए, और हमारे देश में जितने भी दास्ता के चिन्ह थे इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1977 से पहले, ये हार्डिंग लेन है, ये जॉर्ज पंचम रोड है, ये जॉर्ज सस्टम रोड है, ये विक्टोरिया रोड है, ये विलिंगटन हॉस्पिटल है, ये इरविन हॉस्पिटल है। इस दास्ता के चिन्ह क्यों नहीं मिटाए गए? जब जब कांग्रेस इस देश से गई तब तक दास्ता के चिन्ह इस देश से गए हैं, और जब कांग्रेस आती है तो दास्ता और दास्ता के चिन्ह भी वापस लौट के आ जाते हैं। ये देश के हालात रहे हमेशा। तो मैं ये आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर चर्चा करते हुए अगर कोई आंकड़ों की भी बात करे तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देने के बाद भी पहली बार भारत ने 75,000 करोड़ से ऊपर के खाद्यान्न उत्पाद विदेशों को निर्यात किए। आज किसान की आर्थिक स्थिति ये है, हमारे देश के सैनिक की स्थिति ये है, हमारे देश की व्यापारिक स्थिति ये है कि उसके घर पर कोई भी इंस्पेक्टरी राज के लिए उसको तंग करने वाला नहीं है। अभी कल चर्चा हो रही थी, माननीय वित्त मंत्री जी बैंकों का सारा विश्लेषण दे रही थी, वो एनपीए कहां पर गए? ये विजय माल्या, ये मेहुल चौकसी, ये किन लोगों ने इनको लोन दिया था? ये देश से जितने भी भगोड़े हमारा धन लूट के ले गए, ये किन के राज में लेके गए थे? ये विश्लेषण की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि आर्थिक चर्चा करते हुए अगर कभी कोई भी बात आए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में भारत निश्चित रूप से विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आर्थिक स्थिति की चर्चा में आपने मुझको अवसर प्रदान किया है। मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं कि अमेरिकी डॉलर के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने का युग इस वर्तमान अर्थव्यवस्था के कारण ही गया है। आज भारत रुपए से 22 देशों के साथ और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ आयात और निर्यात रुपए में कर रहा है भारत आज।
अमेरिका के बैंक दिवालिया हुए, भारत का कोई बैंक दिवालिया नहीं हुआ। ये अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। और अगर मैं कहूं डॉलर का प्रेम और रुपए का, पिछली सरकारों के कार्यकाल में मैंने कहावत सुनी थी लैला और मजनू की। जब मजनू की पीठ पर बैत पड़ती थी तो लैला की पीठ पर उभरती थी। एक कहावत कही जाती थी, जब डॉलर गिरता था तो रुपया भी गिरता था। और ये था सब उस सरकार के कार्यकाल में। आज डॉलर से कोई संबंध रुपए का नहीं है और रुपया बिल्कुल नहीं कहीं गिर रहा है उनके डॉलर के मुकाबले। आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। आज भारत ने व्यापार करने के लिए 18 देशों को अपनी बैंक में वोस्टो खाता खोलने की अनुमति दी है। रुपए से व्यापार करना ही हमारी आर्थिक स्थिति की मजबूती का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं कुछ तुलनात्मक बिंदु और कहना चाहता हूं। सकल घरेलू उत्पाद में यूपीए सरकार में 113.55 लाख करोड़ रुपए का था। मोदी सरकार के कार्यकाल में 272.04 लाख पहुंच गया। जीडीपी रैंक में यूपीए की सरकार में भारत विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था थी। आज मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में 5वीं अर्थव्यवस्था है और 3री अर्थव्यवस्था पर जाने का संकल्प मोदी जी की सरकार ने किया। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 72.805 थी। 2022-23 में यह 98,374 पहुंच गई है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2014-15 में 45.15 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर था। आज 2021-22 के बाद 83.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर भारत में प्रत्यक्ष निवेश है। व्यापार करने की सुगमता 192वें स्थान पर थे यूपीए सरकार में और आज हिंदुस्तान 63वें स्थान पर है व्यापार करने की सुगमता में। पूंजीगत व्यय परिव्यय की अगर हम चर्चा करें तो 2013 में यूपीए की सरकार में पूंजीगत व्यय 1.88 लाख करोड़ था। मोदी सरकार में 2023-24 में पूंजीगत व्यय बढ़कर 10.01 लाख करोड़, जो यूपीए सरकार से 5 गुना अधिक है। सेंसेक्स और शेयर बाजार की स्थिति की अगर मैं चर्चा करूं तो 26 मई 2014 को सेंसेक्स 24,716.88 पर था। निफ्टी 50 पर के आंकड़े पे था। दिसंबर 2023 में सेंसेक्स ने 69,000 का आंकड़ा छू लिया और अब निफ्टी ने 20,000 के आंकड़े को छुआ। विदेशी मुद्रा भंडार 304.2 बिलियन डॉलर था यूपीए सरकार में और मोदी सरकार में 609 बिलियन डॉलर है। 1 मिनट और दे दीजिए। प्लीज कंक्लूड 30 सेकंड्स। डिजिटल लेन देन की अगर मैं बात करूं, 3 पॉइंट रह गए हैं। 2013-14 में 127 करोड़ का डिजिटल लेन देन था। मोदी सरकार में 12,735 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन है। वित्तीय समावेशन 2014 में कुल बैंक के खातों में 17.5 करोड़ था। मोदी सरकार में बढ़कर 300.1 करोड़ हो गया है। यूनिकॉर्न में 2015 में मात्र देश में 10 यूनिकॉर्न थे, अब 9 वर्षों में यूनिकॉर्न 111 हो गए। अनुसूचित कमर्शियल बैंकों द्वारा वितरित ऋण 2013 तक 55 लाख करोड़ था, अब 141.9 लाख करोड़ है। ये है मोदी सरकार की वर्तमान मजबूत अर्थव्यवस्था का उदाहरण। धन्यवाद। नरेश बंसल। नरेश जी, दिस इज योर मेडन स्पीच। यस सर, धन्यवाद सभापति जी। मेरा 3 वर्ष का कार्यकाल इस सदन के सदस्य के रूप में पूरा हुआ और आज मुझे मेडन स्पीच करने का मौका मिला है। मैं आपका आभारी हूं। उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। 1.5 साल कोरोना में गया और 1 साल विपक्ष के मित्रों ने सदन नहीं चलने दिया, इसलिए मेरे जैसे नए सदस्य बोल नहीं पाए। आज आर्थिक स्थिति पर देश की चर्चा हो रही है और आज सशस्त्र सेना दिवस भी है। मैं अपने भाषण का प्रारंभ चर्चा में भाग लेते हुए सेना को वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए प्रारंभ करना चाहता हूं। और चूंकि आर्थिक स्थिति पर चर्चा है तो सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 70 वर्षों में देश जिन घोटालों के कारण गर्त में गया, उसमें सबसे पहला घोटाला सेना का था।
मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पहले ही कार्यकाल में स्वतंत्रता के बाद इस देश में जीप घोटाला हुआ था, जिसमें रक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद अनेक घोटाले हुए, कई मुंदड़ा घोटाला हुआ, हमने वहां तक का भी दौर देखा है जब नागरवाला कांड हुआ और टेलीफोन पर 60 लाख रुपया स्टेट बैंक से दे दिया गया। किसने लिया, किसके खाते से दिया, पता नहीं आज तक भी। उसके बाद प्लीज अगर मैंने गलत कहा है तो मैं वापस ले लूंगा, पर मुझे जहां तक मालूम है कृष्ण मेनन जी ने इस्तीफा दिया था। फर्स्ट यू आर स्पीकिंग while sitting. Number two, I have not given you permission to speak. Please take your seat. Please take Mr. your seat. Jairam ji, I am not I yielding don't you. appreciate it. I am not yielding You are you. interrupting a person who is making his maiden speech. अनेक घोटाले हुए और 2009 से लेकर 2000 तक तो घोटाले हुए 10 लाख करोड़ के। अगर गिनाने लगेंगे तो बहुत गिन जाएंगे। इस 10 वर्षों में जो कुछ हुआ है, चारों तरफ का विकास दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। हां, दे रहे हैं, क्योंकि हम गरीब की स्थिति बदलना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में उसको सशक्त बनाना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा भी कि मेरी गरीबों की सरकार है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने वाली सरकार है, किसानों की सरकार है। आपकी सरकारों में भी आप कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। जो अनाज उस गरीब का हक है हम उस तक पहुंचा रहे हैं, आपने वो गरीब तक तो नहीं पहुंचाया, उसको सड़ा करके शराब के व्यापारियों को मुफ्त जैसे रेट में देने का काम किया। हमारे जमाने में वो नहीं होता। अभी बताया जांगड़ा जी ने भी कि हमने गरीबों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देकर भी 75,000 करोड़ का अनाज निर्यात किया है। हाँ, मैं इतना बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य में जहां रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी ये सब बड़ी है, 38 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बन रहे हैं। आज सब तरफ की दूरी कम हुई है, आने जाने के साधन बढ़े हैं और पेट्रोल के कंजम्पशन में भी कमी आई है, डीजल के कंजम्पशन में भी कमी आई है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि वो चमत्कारी अर्थशास्त्र हमारे यहां नहीं आया जिसमें 3 करोड़ रुपए की गोभी बालकनी में पैदा होती है। वो नहीं हुआ। 10 साल में कोई घोटाला भी नहीं हुआ। आलू से सोना बनाने वाली मशीन नहीं आई। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गरीबों के लिए नीतियां बनी, मैं प्रारंभ करना चाहता हूं उस गरीब आदमी से जो रोज खाता है, रोज कमाता है, जिसके साथ कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो क्या करे। वो गरीब आदमी जो रोज खाना, रोज कमाना, सवेरे घर से निकलता है, शाम को घर लौटेगा कि नहीं पता नहीं। आपने उस आदमी के बारे में कभी नहीं सोचा। पहली बार गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी ने सोचा उसको 2 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा चक्र 12 रुपए में देने का काम किया। आपके ध्यान में कभी वो गरीब आदमी नहीं आया। वो सुबह जाए, शाम को ना लौटे तो उसका परिवार चौराहे पर आ जाता था। उसकी जवान बेटी की शादी रुक जाती थी, उसके बेटे की पढ़ाई रुक जाती थी। इस 2 लाख रुपए के सुरक्षा चक्र से उसकी बेटी की शादी भी होगी, उसके बेटे की पढ़ाई भी होगी। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतना ही नहीं, मैंने अपने छात्र जीवन में बड़ा नारा सुना, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन गरीबी नहीं हटी। गरीब हटते चले गए, गरीबी नहीं हटी।
उन गरीबों के लिए अगर किसी ने सोचा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा। जो जीवन में कभी घर नहीं बना सकते थे, ऐसे 4 करोड़ लोगों को छत देने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। वो गरीब जिनके लिए आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आपके शासन काल में कभी बैंक के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। मैंने 24 साल बैंक में नौकरी की है। मैंने देखा है जिस समय गरीब खाता खोलने आता था तो मैनेजर कहता था तुम्हारी शिनाख्त कौन करेगा, हु विल इंट्रोड्यूस यू। उसका तो बेचारे का वेश ही उसकी शिनाख्त थी। वही मैनेजर जिसने उसको बाहर निकाला, मोदी जी के नेतृत्व में कैंप लगा लगा करके जनधन के खाते खुले। उन्होंने ही कहा ताऊ आओ खाता खोलो, ताई आओ खाता खोलो। उन्होंने कहा गरीब हैं, पैसे नहीं है। उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा बिना पैसे के खाता खोलो। कैंप लगा लगा करके जनधन के खाते खोले और ऐसे 50 करोड़ लोगों को हम आर्थिक जगत में लेकर के आए जो आपके शासन में कभी आए नहीं थे। उन्होंने भी कहा हम भी एटीएम वाले हैं। उनके खाते खुले। जनधन के खातों के साथ साथ उनको 1 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा भी मिला। इतना ही नहीं, उस गरीब आदमी को और सशक्त करने के लिए, उसको सुरक्षा चक्र देने के लिए 330 रुपए में अटल बीमा योजना ये प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की। 2 लाख रुपए का सुरक्षा चक्र और गरीब आदमी को मिला। 330 और 12 342 साल में दिन होते हैं 365। 1 रुपए रोज से भी कम में 4 लाख रुपए का सुरक्षा चक्र उस गरीब आदमी को मिला जिसकी बेटी की शादी रुक जाती थी, जिसके बेटे की पढ़ाई रुक जाती थी। उसको देने का काम ये गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी ने किया। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, हमारी माताएं बहनें, मैं उत्तराखंड से आता हूं, पहाड़ी प्रदेश है। मैंने संगठन मंत्री के रूप में वहां गांव गांव घुमा है। मैं देखता था जब मैं गांव के अंदर जाता था भोजन करने के लिए, किसी परिवार में जाता था तो पूरी रसोई काली दिखाई देती थी। हमारी पहाड़ की मां बहन का जीवन बड़ा कठिन है। प्रातःकाल 4 बजे शुरू होता है, रात के 12 बजे तक चलता है। प्रातःकाल वो लकड़ी लेने के लिए जाती है, घास लेने के लिए जाती है और लकड़ी पर आकर खाना बनाती है। खाना बनाने से वो सारी रसोई काली दिखाई देती है। लेकिन बरसात में जब वो लकड़ी नहीं जलती, फूंक मारते मारते आंख नाक कान बराबर हो जाते हैं। मेरा गरीब परिवार में जन्म हुआ है। मैंने देखा मेरी माता जी जब खाना बनाती थी, खासकर बरसात के दिनों में वो लकड़ियां नहीं जलती थी तो उनकी हालत खराब हो जाती थी। मेरी माताएं बहनें समय से पहले बूढ़ी लगती थी, आंखें खराब हो जाती थी, अस्थमा की बीमार हो जाती थी। उनको निजात दिलाने का काम उज्ज्वला के 9.5 करोड़ कनेक्शन दे करके गरीब मां के बेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मेरे उत्तराखंड के तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो बीपीएल परिवार को जिनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है उनको 3 सिलेंडर मुफ्त में साल भर में रिफिल करने का काम भी सहयोग करके किया है। मैं बताना चाहता हूं कि वो गरीब जिसको इस प्रकार से कभी सोचा नहीं गया, आज सारी आर्थिक नीतियों में गरीब है। अभी हमारे एक सांसद कह रहे थे कि सरकार है वो गरीब हैं। मैंने भी अर्था था इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय पुअर पीपल। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्यों है वो जिस दल के सदस्य हैं उनके सहयोग से जो सरकारें थी उन सरकारों की नीतियों के कारण ये देश गरीब बना रहा। इस देश के अंदर बहुत क्षमता है, बहुत ताकत है, लेकिन कांग्रेस ने 70 साल में उसको कभी पहचानने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने उस ताकत को पहचाना है। उन्होंने कहा भी है कि 4 ही जातियां हैं, गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है। हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। जहां आप लोग देश को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हो, जातीय जनगणना की बातें कर रहे हो, वहां जो जिनका विकास होना चाहिए वो जातियां गिराई गई हैं। उन जातियों के उद्धार के लिए युवाओं के लिए अवसर प्रदान किए गए। फिट इंडिया, खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया। आज हम देख रहे हैं खेलों में भारत डंके गाड़ रहा है, भारत का डंका बज रहा है।
हर खेलों में पदकों की तालिकाओं की कतार लगी है, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो जेवलिन हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, कोई से भी खेल हो, हर खेलों में पदकों की तालिका बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसको प्रोत्साहन दिया है, युवकों को अवसर प्रदान किया है, युवकों को अग्निवीर के माध्यम से भी देश की सेवा का अवसर प्रदान किया है। आप आलोचना कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन देश के लिए, युवकों के लिए क्रांतिकारी योजना है। हमारा युवा और खेल मंत्रालय इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। ऐसे ही हमारी माताओं बहनों के लिए, माताओं बहनों के सशक्तिकरण करने में काम हुआ है। कितना काम हुआ है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माताओं बहनों को 70 साल की आजादी में भी रोजाना प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले, सायंकाल सूर्यास्त के बाद नित्य कर्म के लिए जाना पड़ता था, जंगलों में जाना पड़ता था, अनेक दुर्घटनाओं का शिकार होती थी, प्रतिदिन आत्मग्लानि से ग्रसित होती थी। ऐसी महिलाओं को सशक्त करने के लिए 14 करोड़ इज्जत घर बनाकर उनके सम्मान की रक्षा की गई है। इतना ही नहीं, देश की आर्थिक स्थिति भी बदली है। अभी हमारे राम गोपाल जी कह रहे थे, प्रोफेसर साहब, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, कि आपने शौचालय तो बनाए हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है, उनमें लोग भूसा भर रहे हैं। मैं राम गोपाल जी से बताना चाहता हूं कि 14 करोड़ शौचालय बनाए हैं तो 12.5 करोड़ लोगों में 70 साल के बाद भी 12.5 करोड़ घरों को नल से स्वच्छ जल देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हाँ, जो टोटी भी उखाड़ कर ले जाएं उनको वो पानी नजर नहीं आएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति बदली है, हम सेना के क्षेत्र में सशक्त हुए हैं, आज विदेशों में हमारा मान सम्मान बढ़ा है, हमारा पासपोर्ट वैल्यू एडेड हुआ है, महंगाई और बेरोजगारी की बड़ी चर्चा हुई है। मैं बताना चाहता हूं, महंगाई के लिए 2-4 चीजों का मैं तुलनात्मक विवरण आपके सामने रखना चाहता हूं। 2004 में जब अटल जी की सरकार गई, यूपीए की सरकार आई, तो आटा था 8 रुपए किलो। 2014 में जब आपने सरकार छोड़ी तो आटा था 24 रुपए किलो, यानी 3 गुना वृद्धि हुई। और आज वही 10 साल हो गए, हमारी सरकार में आटा है 30 रुपए किलो, यानी 1/4 वृद्धि हुई। आपके 10 साल में 3 गुना वृद्धि हुई। आप इससे अंदाजा लगाइए कि महंगाई घटी है कि बढ़ी है। आप पर छोड़ता हूं। कोकोनट ऑयल 26 रुपए किलो, और हमने जब छोड़ा अटल जी की सरकार में तो 26 रुपए किलो था, आपने 2014 में तो 78 रुपए था, यानी 3 गुना, और आज है 88 रुपए। 10 साल में केवल 10 रुपए बढ़े हैं। आपके उसमें तो 26 से 78 हुआ। महंगाई आपके कार्यकाल में थी या अब है, मैं पूछना चाहता हूं। इसी प्रकार में पेट्रोल की बड़ी चर्चा होती है। पेट्रोल पर हमारी सरकार ने 2-2 बार एक्साइज, डीजल पर भी 15-20 रुपए घटाई। हमारी सरकारों ने भी, जो प्रदेश की सरकारें हैं, उन्होंने भी उस पर वेट घटाया, पर आपकी किसी सरकार ने नहीं घटाया। झूठे वादे बहुत करते हो। हिमाचल में पेट्रोल के दाम घटा करके आए और सरकार में आते ही 3 दिन के बाद 3 रुपए लीटर बढ़ा दिया। यह है आपका काम। पेट्रोल 2004 में हमने छोड़ा तो 33 रुपए 70 पैसे लीटर था। आपने छोड़ा तो 72 रुपए 26 पैसे था, दुगने से भी ज्यादा। और आज कितना है? 96 रुपए 70 पैसे। केवल 24 रुपए 10 साल में बढ़े हैं। वो भी आपके कारण बढ़े हैं, क्योंकि आपने जो जगलरी की थी, पेट्रोल के दाम ना बढ़े ज्यादा, इसके लिए आपने जो पेट्रोल कंपनियों को वाउचर दिए थे सब्सिडी के, उसका भुगतान ब्याज सहित नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसलिए फिर भी हमारी वृद्धि आपसे बहुत कम है। आप इसकी तुलना कर लीजिए। इसी प्रकार से और भी मेरे पास आंकड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। थोड़ी सी बात मैं बेरोजगारी की भी कर लूं।
आपके जमाने में रोजगारों की जहां तक बात है, बेरोजगारी हमारे जमाने में घटी है। अनएम्प्लॉयमेंट 20-21 में 4.2% था, 21-22 में 4.1% हुआ और 22-23 में 3.2% निरंतर घटता हुआ आ रहा है, पहले के जमाने से भी। इस प्रकार से रोजगार की बात करें तो जो 9 क्षेत्र हैं उनमें भी 2.3 करोड़ से बढ़कर 3.18 करोड़ रोजगार मिले हैं। ईपीएफओ के नए आंकड़े हैं। ईपीएफओ में जिनके नाम आते हैं, जो संख्या आती है उनके आते हैं, जिनको रोजगार मिला है, जिनका पीएफ कट रहा है, उन आंकड़ों को झुटलाया नहीं जा सकता। ईपीएफ के आंकड़ों के अनुसार 20-21 में 77,08,375 लोगों को रोजगार मिला। 21-22 में 1,22,34,625 लोगों को रोजगार मिला और 23 में सितंबर तक 22-23 में 1,38,51,659 लोगों को रोजगार मिला। इस प्रकार निरंतर जो आप कहते हैं 2 करोड़ पर ईयर के रोजगार कहां गए, वो आप आंकड़ों में देखें तो केवल ईपीएफओ के नहीं, 1.25 लाख स्टार्टअप आज रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनमें से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सभापति जी। इतना ही नहीं, आपके जमाने में 450 स्टार्टअप होते थे, आज 1.25 लाख है। नौजवानों को समय मिल रहा है तो वो करके दिखा रहे हैं। हमने अवसर दिया है। स्टार्टअप नहीं, चाहे पेटेंट की दुनिया में देखें, नए इनोवेशन की दुनिया में देखें। आपके जमाने में 2 मोबाइल फैक्ट्रियां हुआ करती थी, आज 100 से ऊपर मोबाइल फैक्ट्री है। आज हम मोबाइल का निर्यात कर रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में हर चीज हम आयात करते थे, आज हम 20,000 करोड़ का रक्षा के क्षेत्र में निर्यात कर रहे हैं। गरीब आदमी जो दवाइयों के कारण से अपना इलाज नहीं करा पाता था, मोदी जी के नेतृत्व में अभी 10,000 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है और आगे हम 25,000 तक जन औषधि केंद्र लेकर जाएंगे, जो गरीबों को सस्ती दवाइयां 50% से लेकर के 90% तक सस्ती दवाइयां मिलेगी। मैं एक उदाहरण देकर बात समाप्त करूंगा। मैं अभी एम्स ऋषिकेश में गया किसी को देखने के लिए। क्या है 5 लाख रुपए की कैशलेस योजना, उसका प्रभाव देखिए। एक व्यक्ति मेरा जानने वाला दौड़ता हुआ आया, मेरी कोली भरकर रोने लगा। मैंने कहा अनिकेत क्या हुआ? कहने लगा भाई साहब मुझे आज पता लगा कि प्रधानमंत्री जी की 5 लाख वाली कैशलेस योजना कितनी अद्भुत है। मेरे पिताजी का परसों हार्ट अटैक हुआ, रविवार का दिन था, घर में पैसे भी नहीं थे, केवल 37 रुपए में उनका स्टंट पड़ गया। यह है प्रधानमंत्री जी की जीवन बचाने वाली योजना। आर्थिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। 25 वर्ष का हमने संकल्प लिया है। मैं उनको बताना चाहता हूं शिवदासन जी को कि जो वो कह रहे थे रिच बनने की बात, हम हर आदमी को रिच बनाएंगे। कैसे बनेगा? क्योंकि हम 25 वर्षों में संकल्प लेकर चले हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा विश्व का, तो हर आदमी रिच होगा, चिंता मत करें। इसी के साथ आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। श्री एम Shanmugam. Sir, 3 minutes. Thank you, Chairman Sir, for giving me an opportunity to discuss in this economic development, higher GDP and boosting economy. Labor is one important factor, and without cooperation of skilled workers, manpowers, employees, they cannot achieve the result. Sir, labor is not a commodity. Labor is the wealth of the world. To solve the problem of the labor, the tripartism mechanism, it is very, very important. Our country have a very good tripartism mechanism, that is the Indian Labour Conference, the highest body of the labor conference. Sir, from 1940 onwards, every year the conference was held.
At the Prime Minister used to attend that conference. But after this BJP government has come, in 2015, that was the last conference held by this government, and the Prime Minister has also attended. Subsequently, we have demanded so many times to convene this labor conference to settle the issue of the working class. All the central trade union, recognized central trade union in India, we are fighting for the poor working class, and we placed 12 demands to ask the government to discuss those items. So far, the government is not come forward to discuss those things. And the union government passed labor codes hurriedly during the COVID period, but their implementation is not happening because the rules are yet to be notified. Sir, you know that labor is a concurrent subject. Even though if you pass the codes in this August House, the respective states should also be pass the rules. Most of the states, except 3 states, they have passed the rules. So it is very great difficult to implement the 4 codes. So I would urge upon the government not to stand on prestige and to repeal these codes, and fresh legislation can be brought after this consultation with our trade unions. Sir, the Employees Provident Fund Act, it is a very good social security of the working class. In this act, there was no pension provision prior 1971. After that, the family pension was introduced. Subsequently, in 1995, the pension scheme was brought, and the same pension scheme, sir, only 1 minute. Sir, the pension scheme, we are demanding 1,000 rupees for minimum pension once. At the UPA government, they have given. Subsequently, now we are demanding 9,000 rupees. So far, they are not giving. And another one is also, I request the government, there are some public sector and the private sector, they are giving the 30% of the terminal benefit to the workers. That is 12% PF, 4.5% gratuity, 4.5% retiree medical benefit, and the rest of the amount will go to the pension over and above the EPF pension. But after closing of this PSU, after closing of these private sectors, where the workers will go and request for this amount. For that, the government should bring a scheme, thereby taking over such benefit schemes, and the continuity should be guaranteed. The another one is ESI. It is a very good scheme, sir. That ESI scheme, those people who are all exceeding the 21,000 rupees salary, they will be come out from this one. Nowadays, this 21,000 rupees salary, it is very easy, sir. So that we are demanding to the government, up to 21,000, it should be a compulsory. The ESI should be extended. And another one is, in ESI, there is a provision. The minimum salary of the workers per day less than the 175. Thank you. There Thank is you, no honorable necessary member. for the workers have to pay their contributions. So these are the main benefits are there. We are demanding, but they are not giving. And this MSME, the MSME depends upon the PSU and the government sector. The government sector and the PSU. Please conclude. They are not giving to the, only 1 minute, sir. They are not giving to the orders to the MSME. Our finance minister very liberal to give the loan to the MSME. What is the benefit? The PSU and the government sectors are not procure the products. And another is the government is reluctant to recruit the C&D workers.
They are very particular about the A&D only. The C&D workers, they are not recruiting. For that also we request the government should come forward. Thank you, honorable member. Thank you. And the bonus ceiling, sir. The Sir, you have taken nearly double the time. 2007 only, the bonus ceiling was raised. Last 10 years, there is no raise in the bonus ceiling. And we request the BSNL, it is a very good service sector, very largest sector. They are not giving the wage revision so far, sir. So we request, these are the many things are there, but you are not permitting to speak on the very light. So I request the fashion of the government department to engage more and more employees on contract basis, competing with the private sector. There is an effective law on contract for abolition and regulation contract. If the worker is not permanent nature, then they can engage contract workers, but they should be given the benefit at par with the permanent employees. But the government is not enforcing the provisions, which lead to exploitation and inhuman conditions. Thank you, of the sir. contract Thank latter. you. Thank you, sir. Thank you. Honorable Finance Minister to reply. Thank you very much, Chairman, sir. What began as a short duration discussion on the economy, because of the interest which honorable members have shown, have lasted 3 half days. And 60 honorable members have spoken during this debate. And I'm indeed grateful for the various issues that have been discussed, and certainly some concerns and questions which have been raised. I'll try to address them. So even as I begin talking about the short duration discussion held in this House, I'm tempted to start the discussion from a mention outside the House first. Interestingly, it comes from a member of this House about the economy. Shri Jairam Ramesh had mentioned that in all probability there will be a discussion, something to the extent of saying we've been asking for these debates in the previous sessions, but the government has not been willing. We've never been hesitant about talking about the economy. In fact, every time there's been a request to discuss about issues, specific issues related to the economy or the larger one, we've always come in. I thought I'll just draw his attention, other than the usual budget discussions, budget speech discussions separate from the finance bill, we've always yielded. Economic situation in the country in November 2019 was a discussion held. And similarly, prices of essential items, 2nd August 2022, we had an elaborate discussion. So we've never hesitated to have discussion on the economy. And I thought I'll just put that record straight, sir. Sir, I'd like to begin by speaking about how the Indian economy fares in comparison to what is happening all over the world. Honorable members are aware that our second quarter growth has been very high. It's the highest in the world, and we continuously maintain that momentum of being the fastest growing economy. During the same quarter, July to September 23, the third and the fourth largest economies of the world contracted, sir. Germany contracted by 0.4%, and Japan contracted by 2.1%. The other emerging economies, which are largely credited to be the engine of growth for the world as a whole, even emerging economies such as Vietnam grew by 5.33%, Malaysia by 3%, 3.3%, and Thailand by just about 1.5%.
So when you compare all these developments around the world, and for India to have reached 7.6% in the second quarter is a very significant number that we cannot afford to miss. In just last 8 years, India has become the 5th largest economy from being the 10th largest in 2014. So just in these last 8 years, we have reached the 5th largest in size. Sir, the activities are all across the economy. It's not as if one sector is doing well and on the back of that, because the temptation is to say that the services sector, particularly given the fact that the service sector in its software services and the newly coming in global capacity centers and so on, gives us the feeling, and also because the contribution of the service sector to the GDP is very high, touching almost 60%, there is a temptation to think, is this growth on the back of only one sector, whereas it's not. All sectors are growing and growing significantly for us to notice it. So because of the Make in India program and also because of the Prime Minister's production-linked incentive schemes, the manufacturing sector is also now significantly contributing to the economy. The manufacturing sector has registered the highest growth of 13.9% in Q2 of this year. Now, if that is one other point that we would like to notice, there is this emphasis that I like to place on the Purchasing Managers Index. Manufacturing number itself is 13.9% growing, but the Purchasing Managers Index in November 23 was 56, which is in the expansionary territory. Now, PMI has been in the expansionary territory for more than 29 consecutive months. So the sustained growth of manufacturing is very indicated by that. Now, again, a comparison for the manufacturing sector is comparatively, if you're looking at the major economies, including that of the United States of America, Australia, Eurozone, Brazil, China, and South Korea, they have seen a contractionary manufacturing PMI. Let's not miss this point, because all developed countries are all showing in their PMI, the Purchasing Managers Index, a contractionary terrain number. So just to highlight what I'm trying to say is, I've mentioned that 29 consecutive months we have seen the PMI in India in the expansionary territory, whereas in those countries, USA inclusive, they are in the contractionary trend. Now, I'll just read the October and November 23 numbers. For USA, it is just 50 in October, 49.4 in October, and 49.4 in November 2023. Similarly, for Canada, 48.6, 47.7. Australia, 48.2, 47.7. South Korea, 49.8, November 23 is 50. So on, everyone, in fact, the Eurozone collectively, 43.1, 44.3. So on, China's is 50.7 and 49.5. When I bring in China, I know I'm consciously bringing in knowing that it's a larger economy, we are not matching up to them on many scores. But the index today, this is how it is. They're all in the contractionary territory, whereas we are moving forward. So overall, manufacturing. Now, what about exports? Overall exports in October 2023 rose by 9.43% year on year to US dollars 62.26 billions. So exports are also showing very clearly a sign to say that in spite of the consumption and also the demand coming down in the Western economies, our export is showing a growth. WTO halved the world's merchandise trade numbers. They said it's going to come down in 2023, and they said it will come down to 0.8%. India's merchandise exports in the same time
has increased by 6.21% to 33.57 billion in October. So WTO tells you that everywhere it's going to come down to the level of 0.8%, whereas Indian merchandise export is going up, and it's gone up to 6.21%. Last year, sir, India was the world's second largest mobile phone manufacturer. We've exported $10 billion worth of mobile phones in 22-23. Now, passenger vehicles is very important. It's not the luxury item, it's a passenger vehicle. Middle class buys them. The export of passenger vehicles and commercial vehicles from India to many countries has increased. PV exports, therefore, increased by 15% to 6.62 lakh units in the year 22-23, compared to 5.77 lakh units in 21-22. Sir, as per the BCG report, made in India products are now seen increasingly. They're visible in the American supermarkets. Is that an indicator? Maybe not, maybe yes, but we can just gauge what is happening. In the American supermarkets, made in India products are now being increasingly seen in the shelves. While US goods imports from China have declined by 10% from 2018 to 2022, they rose by 44% from India during 18 to 20. Decline in 10% from China goods, whereas what we are exporting merchandise, goods from India, has gone up by 44% to the US. All this is also indicative of the fact that the net direct tax collection is going up. Till November 9th, 10.60 lakh crore has been collected, 21.82% increase year on year. GST collection is now almost on a monthly average stabilized at 1.6 lakh crores. Last month alone, it grew by 15%. E-way bills, very clear indicator of economy being in a positive territory. E-way bills generation has hit another record, and that is highest record till now, October 2023. It crossed 10 crores for the first time since its introduction, surpassing the previous high of 9.34 crores in August 2023. So 10 crores in October, e-way bill generation. CapEx is a very important thing, because we from the government for the last 3 to 4 years have been increasing the public expenditure on capital asset creation. States CapEx also grew in this period. I recognize that. It grew by 74.3% year on year in the quarter ending the first quarter of FY24. And that is largely because 50-year interest-free loans are being given to the states from the center, and that special assistance, which is 50-year interest-free, sir, we have released 1.3 lakh crores. We've made a provision of 1.3 lakh crores in the budget of 23-24. So that is also making states spend a lot more in their capital account, so that capital expenditure, infrastructure building gets a priority. All this has been recognized by even some of the global media, who normally don't write much in appreciation of what is happening in India. But I would like to say that I'm sure the honorable members would have read the Wall Street Journal, S&P Ratings, Bloomberg, all of whom, while speaking very well about the Indian economy, refer to the reform measures undertaken by the honorable PM, taking his name. I would like to say this. Prime Minister Narendra Modi's efforts, this is quote, Prime Minister Narendra Modi's efforts to outrun China and transform India's economic model into one driven by manufacturing rather than consumption are creating a tailwind for infrastructure
and heavy industry companies. So this observation coming from media houses, particularly those who observe the Indian economy at this time, surely gives the feeling that it is all across the board, the development, the kind of buzz which is around the economy. There can always be some points which I'll certainly come to, some honorable members raising issue of, it's actually not reaching some parts of the ground, water is not reaching, or this is not reaching. I'll come to addressing that. But the point on which all of us can take immense pride is something which I list out very quickly. I'm not going to spend much of our time. Where have we reached the topmost position in the world? Where are we in the second position? Where are we in the third position? I'll just list out those items and we'll know that this is across the board for all of us to feel extremely proud of, because this is an achievement the people of India are contributing towards this country. So India is the world's largest producer of milk, largest producer of pulses, dalhan, largest producer of jute, largest producer of sugar, real-time digital payments, largest number happen in India. India is also the second largest production of rice, of wheat, sugarcane, groundnut, vegetables, fruits, cotton, aquaculture, which is inclusive of seaweeds and lotus and so on, and also the marine products. So India is the second largest. Now, second largest again, manufacturer of mobile phones, producer of crude steel. In 2022 alone, sir, India alone registered an increase in production, while Japan, China, Russia, and US all witnessed a drop. They are the major producers. They see a drop in production, and we see not only see a growth, but we've reached the second largest producer status. Coal producer, second largest. Aluminium producer, second largest. And also, India is the second sought after manufacturing destination globally, and this is because of a research which comes from Cushman and Wakefield. So the third position, I'll stop with the third, but then, and also one more on the fourth. Third position, so India has reached the third position in being the biggest producer of fish and fish products, fish-related products. 8% of global production happens here. Startup ecosystem, third largest. Automobile market, third largest. Pharmaceutical industry, third largest. Power producer, third largest power producer. Limestone producer, third largest power producer. When I say this, I'm just taking my mind picture back to that one day when the grid collapsed over the western part of the country, and we were running short of technology to handle it, and we also had shortfall elsewhere in the country, but no more of that. Today, India is the third largest producer of power. India also has, especially when we're talking of climate and green action and so on, ranks third in forest gain area. India has added 2.66 lakh hectares of forest area every year between 2010 to 2020. So 2010, I'm including 10, 11, 12, 13. It's not as if, as often it is alleged, oh, for this side of the house, it's always world began in 2014. No, world began also in 2010, and I'm recognizing it. India stands fourth, sir, globally in renewable energy installed capacity. This is a very attractive number, and also to see where our initiatives are giving us tangible results. Renewable energy installed capacity, fourth in wind power capacity, fourth in solar power capacity. And this is something which the REN 21 Renewables 2022 Global Status Report recognizes as a big achievement of India. Now, all this is not happening in only the metropolitan cities. Several things have changed in rural India, and as a result of which, our economy is getting the best from the rural area and also from the metropolitan. Purely concentrating on rural India, sir, I want to highlight the numbers between 2014 and 2023, just so that we know the economy is
in many ways pulsating in rural areas, and there shouldn't be any apprehension that everything is happening in the urban. Food grain production, now naturally, 2014, it was 265 MMT. 2023, it's 323.55 million metric tons. Food grain production has had a leap of an increase. Pulses procurement, 1.52 lakh metric tons in 2014. Today, 82.21 lakh metric tons, 54-fold increase. Pulses procurement from the farmers. Milk production, 146.39 million tons in 14, 221.06 million tons in 2023. Ethanol production, which is going to directly benefit the farmers, just as others also, I suppose. Ethanol procurement, because you procure it from the farmer directly, 38 crore liters in 2014. Now it is 434 crore liters. Fund allocation, sir, for rural houses. In 2014, it was 66,046 crores. In 2014 to 23, totally 2.02 lakh crores, 3 times increase for rural houses, funds that have been allocated by us. Average annual person days generated under Manrega, that is something of interest for so many honorable members. 208 crore days in 2014, 248 crore days now in 2023. Sir, Gram Sadak Yojana, completed road length, 2014, 3.81 lakh kilometers. Now, 6.21 lakh kilometers, 2.40 lakh kilometers have been added on to the total which existed earlier. Agriculture budget, 2013-14, 21,933 crores. Now it's 1,25,036 crores, 5.7-fold increase. MSP payment for wheat, again this, and the MSP payment for paddy going directly to the farmer, 2006 to 14, 2.39 lakh crores, whereas what is gone for wheat now between 2014 and 22 is 4.52 lakh crores. The MSP payment for paddy is even more striking. 2006 to 14, 3.09 lakh crores were given for the procurement of MSP payment which were sent to the farmers. Between 2014 and 22, 10.06 lakh crores have gone to the paddy farmers for MSP. So these are indicative that it is not one sector, it is not just the urban areas. The economy in all sides, urban, rural, everywhere, is seeing support from the government in terms of agricultural activities and also other activities. Otherwise, they wouldn't have reached these kind of milestones. Sir, it's not just the numbers. It's also the way in which some schemes get executed. I want, for the sake of honorable members, to do a comparison between schemes which existed earlier and schemes that we are implementing, and to show how the execution of these schemes are making a difference to the common man's lives. Sir, Jan Dhan Yojana is something which we speak very often for financial inclusion. There was a scheme called Basic Savings Bank Deposit Accounts, a scheme which was launched in 2005. In nearly 10 years of that scheme, after being launched in 2005, in 2014, 10 years afterwards, there were 24.3 crore this Basic Savings Bank Deposit bank accounts which were opened. That account, which was open for these poor people, had no facility for a debit card, had no overdraft facility,
and also no insurance coverage. Suppose this person who gets this account dies in the after opening the account, there is an insurance payment. None of these provisions existed in that scheme. Whereas under NDA now, Jan Dhan Yojana, which was launched in 2014, and in 10 years, I'm comparing that 10-year set of 10 years and here 10 years, in December 2023, 51 crore Jan Dhan accounts have been opened. Compare the 24.3 crore, which had no other highlights, whereas here with the highlights. What are the highlights here? KYC have been made easy, debit cards and UPI payments have been made, 10,000 rupees overdraft without collateral is provided for that account, and accident insurance cover is also provided. So just want to show that looking at a recipient, the beneficiary who lives in the village, who needs financial inclusion, not just opening of an account, but also coverage, and also for him to do his business further with working capital. This scheme and that scheme, I just want to highlight. So in a way, I'm going to call these Naam Ke Vaste scheme, which existed earlier, find life now and actually reach the right kind of target in the beneficiary's name. So BSBD accounts were Naam Ke Vaste. Pension, again, Naam Ke Vaste. Launch it, forget it. Swalamban scheme launched in 2010. 2010. In 5 years, they had 29.42 lakh accounts opened. That is in 2014, they ended up with only 29.42 accounts. Now, Swalamban scheme is what is Atal Pension Yojana. Launched in 2015, 8 years only. And in 8 years, I'm comparing that with this, 5.95 crore subscribers have come into this scheme. 20 times more than Swalamban. Again, a Naam Ke Vaste program brought in and then left where it is. But if you invoke something here, they'll say, oh, we've launched it, you don't credit us. Credit we will, but this is the performance. Jan Aushadhi Kendras. Jan Aushadhi scheme again was launched in 2008, sir. And in 2014, they had only 80 stores, 80 stores. In 2000, that scheme got continued. December 2023, sir, 10,000 stores have been opened in Jan Aushadhi. Where is 10? And where is this? And in the 10,000, now we've said we'll take it further to 25,000. Jan Aushadhi. In the Jan Aushadhi Kendras, the common people, I go visit Jan Aushadhi Kendras and talk to the people who are buying medicines there, check up with them, whether the claim that in many cases, the prices are less by 66%, 72%, 89% in some other are true or not. And people tell you what they're buying. 1,800 medicines are available, more than that, but I'm rounding it off. 1,800 medicines are available for the common citizen. Blood pressure, fever, seasonal illnesses, sugar, everything. And 2,000 plus equipments are also available there. So I want to say again, another Naam Ke Vaste scheme, Jan Aushadhi scheme, has become meaningful for the common citizen, and this is how far it reaches. Another Naam Ke Vaste, sir. Rashtriya Swasthya Bima Yojana, launched in 2008. It ran 5 years till 2014. How many BPL families were provided any kind of insurance cover? 3.85 crores. And what was that cover? 30,000 per annum was the cover given. Ayushman Bharat, launched in 2018. By December 2023, 27.89 crore individuals have been provided health insurance cover, and that is 5 lakh an annum per family. Again, a Naam Ke Vaste. Another Naam Ke Vaste, sir, housing. Indira Awas Yojana, launched in 1985. 1985 to 2014, 29 years it ran, sir. 3.25 crore rural houses built. 3.25 rural houses built.
PM Awas Yojana, launched in 2016, comparable. In 8 years, sir, both Grameen and urban put together, we have 3.6 crores of houses built. 29 years, 3.25 crore. 8 years, 3.6 crore households. Naam ke vaste. Now, sanitation, again, Naam ke vaste, one scheme. Nirmal Bharat Abhiyan launched in 2009. 5 years till 2014, sir, 38.7% rural sanitation coverage was provided. I remember, I can't see him now, Professor Ram Gopal Yadav, who I respect a lot and who had a lot of, most of the time he intervenes to ask about what's happening in the ground, is there any difference? So his concern, I do take cognizance of, he spoke. I want to use this one data. There's also more which I'll use to answer his concern. Swachh Bharat Abhiyan, launched in 2014. Now, 2022 data, 95.4% of surveyed houses have access to toilets. 95.4%. So tap water connection. Again, a scheme launched in 2019. There's no a particular scheme with which I can exactly compare. 3.23 household, 3.23 crore households. That is 16.82 of the total households had tap water connection in 2019. But when the Jal Jeevan mission took force in December 2023, 13.75 crore households have been connected with water. That is, we started with 16.82 households, 82% of the total households. Now it is 71% of the total households which have got covered. So LPG gas cylinder, another naam ke vaste. LPG connections were provided under Rajiv Gandhi Gramin LPG Vitran Yojana. 5.82 lakh beneficiaries were there as of 1st June 2014. And even that is not exactly comparable because there the deposit for getting the cylinder was provided by the oil marketing companies. So really may not be exactly comparable because here cylinder is free, connection is free, and then deposit is not taken. So this Ujjwala scheme which has come, sir, 99.8% households have been covered by 2021 itself. Currently, we have 9.8. Currently, we have about 9.8 crore beneficiaries. Domestic LPG connections in 2014, sir, totally, inclusive of Ujjwala, was 14.5 crore in 2014. Now it is 31.4 crore domestic LPG. Schemes which didn't have an earlier equivalent, I just want to quickly run through to say how section after section of those who are deserving of government policy support have been targeted through specific projects, schemes, and as a result, groundswell is seen. I just want to highlight. And very many times people do ask, what happened to farmers? Have you given them? You said you will give double their income and so on. Such questions get answered in this set of, very quickly I'll highlight, PM Kisan, sir. 11 crore beneficiaries get 6,000 per annum as income support. PM Mudra scheme, where people get collateral-free loan to run their small businesses. 44 crore beneficiaries with 25 lakh crore having been dispersed. And in that, 68% are women. Mudra loans. PM Swanidhi, 73 lakh beneficiaries. Again, 44% are women and approximately 75% belong to non-general caste groups. PM Jeevan Jyoti Bima Yojana, 18.58 crore beneficiaries at
1.19 per day, that is 436 per year, life insurance of 2 lakhs. At this price, at this premium, they get a 2 lakh insurance. 18.58 crore beneficiaries have got it. PM Suraksha Bima Yojana, sir, 41.16 crore beneficiaries have received it. Total permanent disability cover of 2 lakh and partial disability cover of 1 lakh have already been dispersed. I mean, this is a cover, but many of them have received it. Stand Up India, sir, loans to 2.08 lakh beneficiaries. Rupees 22,000 crore loans have been dispersed. So from the government side, continuously, we are looking at helping people. Now I come to address issues raised by members of parliament, sir, while talking. There was a lot of concern about malnutrition. Member Derek O'Brien, former Finance Minister Chidambaramji, Ami Yagnik, all spoke about malnutrition. So I just want to highlight nutrition and sanitation closely linked to each other. Very quickly, 11 crore toilets have been built under Swachh Bharat Abhiyan. Jan Aushadhi Suvidha sanitary pads at 1 rupee per pad is being distributed. Millets as Sri Anna is being promoted. Enrollment of girls in secondary education has increased from 75% to 79% between 14 and 2021. Institutional deliveries has also shown an improvement from 87% in 2014-15 to 94% in 2021. Percentage of first trimester antenatal care registration has shown improvement from 61% to 73.94% between 14 and 2021. There are also multidimensional poverty-related indicators, which I will very quickly refer to. Member Dr. Sudhanshu Trivedi had gone into in great detail about it, so I don't want to take your time on points which have already been covered. But I just want to highlight the National Multidimensional Poverty Index Report of 2022, published by the Niti Aayog, shows a remarkable decline in the prevalence of multidimensional poverty. The national MPI has halved from 0.117 in 2015-16 to 0.066 in 1921. So 13.5 crore Indians have escaped multidimensional poverty between 15-16 to 19 and 21. 13.5 crore Indians. Sir, this program, the Aspirational Districts program, I'll refer to it once more later, launched by Honorable Prime Minister in 2018, is a testament to how our government's commitment to the people who are in the far-flung areas, really remote areas, have benefited because of the focus that we've given on to the Aspirational District program. Just look at health and nutrition, the point on which many members were concerned. Percentage of pregnant mothers registered in antenatal care. In 2018, it was just 68%. I'm talking about the aspirational districts. In 23, it went up to 89%, sir, 21% improvement. Institutional deliveries, 69% has gone up to 90%. There's a 31% improvement. And also the PM Jandan Yojana, Jeevan Jyoti Bima Yojana, 7-fold increase and 5-fold increase in Suraksha Bima Yojana. So my appeal is nutrition and nutrition-related issues, health, any case being both with the center and state, is something on which all of us will have to work together. Party-driven politics may not
help the situation, it can only aggravate. Just as in women's issues, particularly law and order related to women's issues, I keep saying we should not politicize it. Because once you do that, your number versus my number, but the person who's suffering remains wherever she is, wherever he is, particularly in nutrition-related matters. So I was tempted to bring in one aspect of how, in what we think, and maybe data also shows, in a state like Kerala, nutrition, education are all very well taken care of. No, wait a minute, I didn't complete. I knew you will come back. Now, you may not be very pleased with what I'm going to say. Yes. So, when we don't need to politicize, sir, we can always exchange about the good work done here, the good work done there, and so on, with an understanding that all of us will have to work together for taking it further for better days. But if you are so concerned about nutrition under Modi, that's why it's bad. I'd like to say, not very long back in 2018, there was this very sensational case from Kerala of a tribal young man begging for food and who was killed. Madhu. So politicizing doesn't help. I don't want to say more on it, but I have the proof, sir. I'm not, it's not a fictional, or it's not a story that I'm creating here, but that's truth here. Yeah, I'm also coming up with the data. And that's why I want to say, let's not politicize issues of women, nutrition, education. It's a subject where both center and state has responsibility. If Modi has not given money, you ask me, but Modi has not stopped you from giving nutrition to your own tribal people. Madhu wouldn't have died if that literate and very respected state, God's own country, which I love a lot, which I respect a lot, wouldn't have died if that state had taken care of it. So, that's okay. That is why I'm saying no point in politicizing, all right? So, yeah. All right. All of you all had your turn to speak. Let me reply now. Sir, member is not here. Normal rule earlier used to be don't reply to members who are not here. I'm not sure whether I should do it, whether I should stick to that, but it is a very important point. Honorable Finance Minister, Sir? Some of the members have sought my leave, that on account of a commitment, they will not be here. That's fine. So, response needs to be imparted. Response? Needs to be imparted. Imparted. Because the honorable members, in all fairness, have sought my leave, that they would not be able to be here. And therefore, I'm sure that is required. Thank you. I just want to highlight that Honorable Member Derek O'Brien had mentioned elections are won and lost. You win, we win, you lose, we lose. Let's compare equals. He said, our growth, your growth. But I want to say that comparison, elections are won, elections are lost. So you and us, and also the point that we have not won against them was underlined. Yes, of course, we have not won against them. But the point is very grave here, which I want to highlight. You may win an election, we may win an election. What follows soon after is a law and order issue. And that's where you are certainly not equal to us. You win an election being an incumbent, sitting in power, win an election, and after that, lawlessness, mayhem, clashes, sexual assault, brazen murders have happened in West Bengal. And they're not my words. High Court, Calcutta High Court has said, sir, and I'm quoting, in 60% of the cases, FIRs were not registered. Therefore, total cases of violence understated, unquote. This is the Calcutta High Court's observation. So what is the comparison? I win, you win. We all win means my cadres, ordinary citizens, are at risk
they get raped, they get murdered, their houses get burnt. So don't you compare. Don't you compare. Honorable Finance Minister, Honorable Finance Minister, we lay the High Court judgment on the table. Sir? You will authenticate the High Court judgment. Of course I will, sir. Please. Of course I will. Thank you. Sir, the incidents are such worrisome incidents, sir. So this very house, which periodically talks about women's welfare, women's law and order related issues, that is where I start telling, if we start politicizing women's issues, malnutrition, and about children, there is no end. I can point a finger, they can point a finger, no end to it. But look at the gravity. 4th May 2021, 60-year-old woman was gang raped in Kejuri in front of her 6-year-old grandson while her daughter-in-law was beaten up. So you win, I win, sir. You win and I win. May 21st. May 21st. I don't mind, I'll hear. Sir, I'm happy to sit down. I can happily sit down. Ma'am, I'm responding to you. I'll sit down. But if the issues have been raised by members, I'm duty bound to give an answer. I quite welcome you telling anything to me. Oh, this is not economy. Oh, this is not the discussion. Oh, this is not on jobs. I will talk about it because the comparison came from your end. I will respond to it. Sir, 5th May 21, Arup Das, a BJP Karyakarta, a resident of Natra village in Indus, was found hanging from a tree. Who did it? Till now. And out of the court, Calcutta High Court again, sir, comes to my rescue. I will give you the statement authenticated. I am quoting here, sir. Out of 268 FIRs, sir, I heard all members speak. Honorable Finance Minister. Sit down. Honorable Finance Minister. Out of, I'm quoting, sir. Honorable Finance Minister. FIRs. Honorable Finance Minister. Honorable members, I have already directed the Honorable Finance Minister that the references she has made about High Court observations in judicial orders, she will authenticate, and not only authenticate reporting of those judgments, but put on the table of the House the judgment. Please go ahead. Thank you very much, sir. Sir, quoting again, sir, 19th August 2021, the High Court of Calcutta observed, quote, out of 268 FIRs claimed to be registered by the police suo motu, copies of only 219 could be found. It is evident that 62 FIRs were registered up to May 5, 2021, whereas 157 FIRs were registered from May 6, 2021 onwards. Some of these were registered immediately after the offense was committed, whereas in many of these, FIRs were registered belatedly. Unquote. So the last point on this, on 6 May 2021, MOS Muralidharan and his convoy was attacked. Not even a central minister is safe. So you win, I win doesn't work. Doesn't work at all. Sir, I'll come to responding to some of the observation made by Honorable former Finance Minister. And if you'll allow me, if you'll indulge me with a light-hearted banter, if I may use.
Honorable Chair has already ordered me. I ordered. There is already a direction. Yes, and I'll look into it after I go through it. Please. Ma'am, you were saying something in light-hearted manner. Sir, if you'll indulge Please me. do that. We need it. Sorry? Light-hearted No, comment. Sir, I'm very serious. Sir, it was a bit surprising, sir. It was a bit surprising and it was also uncharacteristic, I would say, to see the former finance minister, who's very senior, highly educated, was in the prestigious Harvard University even in 1968 when I was in primary school. But he wholeheartedly concurred and sort of rode on the arguments provided by Derek O'Brien. He took his name more than 3-4 times. Hang on. I've sought the permission of the House. The honorable members here, with respect, I'm giving my observation. There's no other way in which a light-hearted observation can be accommodated. I started thinking, was it an attempt to placate the All India Trinamool Congress to come and attend the ... alliance because they seem to be hot and cold? What is it? I didn't understand, because much before you could come to talking about the economy, that happened. And I said, oh my God, now this is all between All India Trinamool Congress and Congress. The dotted alliance needs them, and they seem to be saying hot and cold. Take it. Oh. I had the occasion to make a reference to Mr. Derek O'Brien name on 3 occasions. And we had a very quick comment from Jairam Ramesh. Is something cooking, something like that you said? Am I right, Jairam? When I took name of Derek O'Brien 3 times on a particular day, the record shows it, you made a comment. Similar kind of comment was made. So no comparison with you, sir. And so, but sir, I just want to say, no, come on. I sought his permission for a banter, right? Thank you. So the former finance minister made a very linear comparison as to how the GDP has grown from 1991-92, 25 lakh crore, and then 50 lakh crore, and then 100 lakh crores, and so on, and then wondered if I will say that by the end of 23-24, India will have 100 lakh crore as the GDP. That is, if I heard him right, he said going by the trend of doubling every 10 years, it might. So I'm confident that the question is asked with a certain sense of confidence that the Indian economy and people are contributing for its growth. But I would only refer to one editorial which appears today in a paper. I'm not saying my view, but if you would permit me, and I also do an authentication and everything else, there is an editorial in the Economic Times today, which says, a $4 trillion plus we go. GDP expected to catch up in the coming fiscal. And goes to elaborate, and there's just one line that I'll read for the House, for the benefit of the House, and I quote, as India's GDP rises, would the market cap rise in tandem? Though there is no direct correlation, there could be significant wealth effects that provide tailwinds to the economy. Retail investors own 10% of the equity, about $400 billion, and their share has been rising. That should help consumption, which accounts for close to 60% of the GDP. So, linking that
to the growth of the GDP itself. This write-up, which is an editorial in a paper, which is a pink paper, which observes the Indian economy, we get a picture and a probable answer to the former finance minister. Sir, then the worker population ratio was also another issue that the Honorable former finance minister raised. I just want to highlight incorrect it was for him to suggest that the worker population ratio has not improved. There is, obviously, he's done some kind of a, if you permit me, whimsical calculation there and then, and which serves him well, and the interpretation is not right. As per the PLFS, that is the Periodic Labor Force Survey, WPR, the worker population ratio, that is the share of the employed in the total population, has increased to 56% in 2022-23 from 46.8% in 2017-18. And I underline the fact that this is post-COVID, that it has gone up to 56%. So there is an increase in the worker population ratio, and this is government's data. So youth unemployment rate, that is the age between 15 to 29, has declined. Unemployment rate has declined to 10% in 2022-23 from 17.8% in 17-18. So there, the unemployment is also declined, while youth LFPR has expanded from 38% to 44.5% over the same period. So unemployment is coming down. You have the data to show it's also, employment is also going up. In fact, sir, WPR in 2005 was 42%, which fell to 38.6% in 2011-12. So fall happened then. Then, despite a COVID, which is a once-in-a-century pandemic, we have revived the employment, and the data shows that very clearly. And also, sir, the various schemes that we have, Mudra or Swanidhi and so on, are promoting self-employment, particularly the lower sections of our society. More than 25 lakh crores have been dispersed to over 44 crore Mudra accounts. 68% of them are women. They do their own business and probably employ one or two more people there. 73 lakh street vendors have availed of cheap credit under PM Swanidhi program, and even in that 44% are women. So I think the hard work and the entrepreneurial spirit of the Indian youth who go in for small self-employment cannot be ignored at convenience and cannot be raised saying, oh, the poor are without jobs at some other time. There should be some kind of a alignment. So this was raised by very many members, other than former finance minister, Kanimuri, Dr. Ashok Kumar Mittal, and also Sujit Kumarji, Jose K. Mani, all of them had raised this issue. So the attempt to bring more employment, self-employment among women is also shown by the program that has been recently launched. And I saw with my eyes when I went to the rural areas, particularly with the Vikasit Bharat Sankalp Yatra, I saw the excitement among women because Namo Drone Didi program is an amazing reception that I saw, where the women self-help group women are being picked up based on their interest to be given 15 days of training to operate drone, and subsequently in the 15 days, 5 days will be also on the field where they will go and test for themselves how to operate it, because they can use for spraying of fertilizers, for monitoring the crop health and so on. So they're going to be given drones as well through their SHGs. So women are now going to be handling technology-driven drones in the villages to help agricultural activity. And what can be more empowering for the women in the rural areas?
government's idea is to distribute 15,000, provide 15,000 drones to self-help groups, and for this an outlay of 1,261 crores. This scheme is 100% funded by the central government for a period between 2024-25 and 25-26. 2 years, this scheme will reach all the women in the rural areas so that they're trained in technologically handling this drone. Sir, concern has been expressed about inflation and inflation management. Quite a few members, Rajiv Shukla ji, Ashok Mittal ji, Derek O'Brien, all raised the issue. Sir, average inflation during 2014-15 up to 2023-24 has only been around 5.5%. Now, since 2014, the retail inflation breached the number and reached the highest point of 7.79 in April 2022. I concede that. But by contrast, of course, because that is important to remind ourselves that between 2004 and 14, the average inflation was 8.1%. So I just want this number to be in the back of our minds. And in between 2009 to 14, 2009 to 2014, the average inflation was 10.4%, double-digit inflation. So I just want that to be highlighted. We have taken quite a few steps to make sure that I know the Consumer Affairs Minister, the Food Minister, Piyush Goyal, the Leader of the House, has been on and off releasing pulses, on and off releasing onions from the godown, from the buffer stock. Procurement and distribution of tomatoes and onions are happening as and when there is a need. Imposition of stock limits have been on pulses and wheat. Our trade policy also sees changes so that our buffer is kept safely for ourselves. And import restrictions and quotas have been introduced on specific commodities. More than that, sir, you would recall that the Honorable Prime Minister, before Raksha Bandhan, had brought down the price of cylinders by 200 rupees. And this impacted 9.8 crore Ujjwala beneficiaries, and who now get 300 rupees subsidy, and the cylinder costs 603 rupees only for them. And similarly, it has been mentioned by several people, the PM Garib Kalyan Anna Yojana provides 81.35 crore beneficiaries for the next 5 years food grains for free. Contrast this, sir, contrast this with those states which, when we reduced the duty on petrol and diesel, did not reduce. And some of those states were lost by those ruling dispensation because it kept the price very high. And I would just recall that Punjab, Rajasthan were all such states who refused to budge. On the contrary, Punjab even raised the price. So, Himachal also. So, these are states which are going against the well-being of the poor, but question us, saying, oh, you're not taking care of the poor. Why wouldn't you want to reduce the price? We have done it 3 times, and now it's come down to 603 per cylinder, sir. That's right. Sir, and that is why people rejected them. Petrol and diesel being the highest price, sir, you come from Rajasthan, and in that state, the price has remained very high. Inflation as a result has been high. No wonder the people have rejected them. So there were concerns expressed about savings in the economy. Quite a few members had spoken about it. Household savings are also going towards asset creation. I want to bring that dimension in because it's important for us to recognize that when households do have some money in their hand, they also want to invest in assets such as having a own house. Then households added net financial assets
of 22.8 lakh crore in the year 21, financial year 2021. Nearly 17.0 lakh crores in 22 and 13.8 lakh crores in 23. This can't, of course, be seen in isolation. This is an incremental purchase of an asset for themselves. They're making smarter choices, not just putting it in post office accounts. People are also now investing in the retail market. Retail market consists of small investors who are coming for small shares, and they're doing it on their own, not going through mutual funds. Overall household savings, which includes financial and physical savings, grew at 9.2% CAGR between 13-14 and 21-22. That is 8 years. It's grown in that kind of a number. The nominal GDP has grown at CAGR 9.65 during the same period. Hence, the household savings has remained constant. It has not come down. But the fact that it is going also to through the stock markets, net unique account, demat account opened are also reaching record numbers. I just want to highlight that the asset under management of the Indian mutual fund industries, for those who are going through the mutual fund, has grown 5 times in 10 years from 8.34 lakh crores in October 2013 to 46.71 lakh crores in October 2023. Total demat accounts in India, have crossed 13 crores, the highest ever touched in India. It has increased by almost 6 times since 2014, when it was only 2.18 crores. It has tripled since the onset of COVID-19, which is a remarkable point to be observed. So there was also a lot of concern about US dollar strengthening against the Indian rupee. I just want to highlight the recent article which has come up, sir. The clearest sign that things are going well, a stable currency, was the title of that article. And it quotes, rupee has lost less than 1% of its value against the US dollar this year. And this is an article which was published in Wall Street Journal, a leading US newspaper, on 28th November. It's not something which is old, 28th November. The title of that article was interesting. It said, virtually everything has gone right for India. And in that it says, rupee has lost, and I quote, rupee has lost less than 1% of its value against the US dollar this year, compared with the decline of more than 3% for the Chinese yuan, a roughly 9% fall in the South African rand, and an 11% slide in the Japanese yen. Indian economy is benefiting from reforms put in place by the government of Prime Minister Modi, unquote. This is Wall Street Journal telling about the Indian rupee versus the US dollar. And I'd like to recall that several months ago, I spoke about the Indian rupee standing up to the dollar and the dollar's value going up, but the rupee not losing value. There was complete mockery at me, saying, oh, how can this be? That goes up and you don't come down. Please do read. Then you'll know why the Indian rupee stands stable against an ever-increasing dollar. And that cannot happen unless the Indian economy and its fundamentals are strong. It's not a fiction. It's not a fiction of my imagination. Sir, I will come up to something more on which John Britta's honorable member would have
more interest about Kerala. I'll come to that. So reserve some energy for that. So the next question was about, and this is Dr. Shantanu Sen. I'm not sure he's here, but, oh, he's here, sorry. About why central government sends teams to inquire. Why won't we release the funds in time? And also thought that we were against the poor by not releasing the funds. I just want to put some facts on record, sir. A central team was sent for an inquiry on January 22nd, 2019 to 2019, January 24th, 3-4 days. They visited about 6 gram panchayats. I'm just giving you this as one of the examples. This team visited 6 gram panchayats in 4 blocks in Purva Bardhaman and 7 gram panchayats in 3 blocks of Hooghly district, and a total recovery of 484.27 lakh was reported. 484.27 lakh was reported. Now, the state government after that sends a action taken report because that was sought from the state. And the action taken report says that the state government had deposited the recoverable amount from the state treasury. However, recovery has not been made in toto from each and every defaulter, which is not acceptable. It's a double whammy if you ask me. Money has gone away from the treasury, God knows to where. And when that is questioned even by the CAG or by the inquiry teams, quickly that money is made good by putting it from the treasury into the account where it has to go. You're using the taxpayers' money to make good of leakage which has happened. And when the leakage is spotted, that money is not getting recovered. That money is being made good by another set of public taxpayers' money. How good is this? Who's taking away the poor people's money? And when this is questioned, we are accused of not helping the poor. Sir, the action taken further says the action taken such as FIR, disciplinary action against officials, dismissals, etc., are against very low-ranking panchayat level officers, and no case against the district level or senior officers has been made. Then the other kind of thing which got noticed was existing work is getting shown as work done under Manrega. That work is already done and it is there. You're re-putting it under the Manrega account. Is it wrong to highlight it? This was double accounting. So when you question us, saying you have not released money, you are sending teams. The teams are finding all this out. So existing work gets fraudulently shown as work done under Manrega. And you also, even worse, sir, a state which had a long tenure of communists and who question everything done here should be questioning some things which is happening in Bengal. Private tea estate gets road done under Manrega, sir. Private property gets work done under Manrega. Communists couldn't even raise it. And when we raise it, how can you use Manrega money for doing a private laying of the road in a tea estate which is owned by a large tea estate owner? People talk to us about you only benefit 1 or 2 big companies. What's this, sir? What is this, sir? So I want very clearly correction to be done in favor of the poor. Correction to be done in the name of using public money responsibly. And that is where we've been asking questions. And that is where answers which come don't give you complete answer. So I'm sorry, the teams have come. 19 is when they went. 5 years are going to get over. Now you keep asking us without correcting course. Is it wrong, sir, in this house to raise questions about public money? It's our business, all our business, to make sure the money goes to the right people. And that is why Honorable Prime Minister says, adopt technology, use DBT,
put it into the account of the common man. Doing that in the first few years, DBT gave us 2 lakh crore advantage in that pilferage was stopped. Adopt such methods rather than continuously pointing to us saying, no, you're not giving money. That is going there in Bengal. They go to the street to say Modi is not giving money for the poor. Who's not giving money for the poor? Leaked money is getting filled by taxpayers' money. Is that serving the poor? Sir. Sir, again, Professor Ram Gopal Yadav. Sir, Professor Ram Gopal Yadav and also Ajit Kumar Bhuyan, independent from Assam, have all been talking about private final consumption expenditure in the GDP. I would like to say it stands at 58.5% in 22-23, the highest since 2006-2007. The gross fixed capital formation, the share of the gross fixed capital formation in GDP stood at 34% in 22-23, again highest since 2013-14. So per capita income was also a matter on which questions were raised. I just want to say in rupee terms, I'll also give in dollar terms. In rupee terms, per capita GDP at constant price was 78,348 Indian rupees. In 2013-14, it has increased to 1,15,746 rupees in 2022-23. Substantial increase in per capita at constant price. If any member is interested in knowing about the US dollar rate, per capita income was $1,438 in 2013-14. It has increased to $2,389 in 2022-23. So it's a 5.8% increase. India's rank in the per capita income was 147 out of 189 countries in 2013-14, which has moved up to 141st rank. From 147, we've moved up to 141. Sir, it is something which, before I go to talking about Kerala, I just want to highlight the fact that particularly, and recently also we heard the Honorable Prime Minister saying, I'm not worried, I'm not going to be swayed by caste differences, backward, or religion, or any, but for me, there are only 4 such castes which I will serve now. And I've been serving them, I'll serve them further. And if I do that, across all castes, across all religion, people will get covered. So if you were to touch the poor and serve the poor, poor of all communities, poor of all castes, poor of all religions will get covered. So poor, the farmer, women, and the youth are the 4 which have been continuously under priority of this government. And this was also taken up from the point of view of aspirational districts. 112 aspirational districts. In other words, they were aspirational for us because they are actually districts, even in a developed state, they could be the pocket which is not so well developed. But instead of calling them backward, we call them aspirational. Such aspirational districts, sir, I just want to say, because quite a few members asked us, no, in the ground level, it is not translating. Actually, all the schemes that you're announcing are not reaching the common people. I want to take this as an example to tell all the members here, sir, that of the 112 aspirational districts, 26 are spread across 4 states and account for 81 assembly seats in the recently held elections of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, and Telangana. 26 of the 112, in which complete focus of the government has been there to make sure that also come up to the level of the rest of the developed states. And I'm glad to say that this emphasis of the Honorable Prime Minister on the poor, on the women, on the farmers, and on the youth, and supporting them to the last level. Now, the aspirational districts
have moved over to aspirational blocks. We are taking it further down to mention that saturation of all schemes will be taken up. Common people have recognized this. Women have recognized this. That's why they're enthusiastic about the drone, about the SHG groups getting help. So the enthusiasm is not just there, but it has translated into votes also. I want to just place it before the honorable members that the results show that over 2/3 of the seats in these 26 districts across 4 states, 2/3 in these 26 aspirational districts, which are spread across 4 states, have gone to the BJP. And this again is not just my analysis, my data, Election Commission's data, all of us base it on Election Commission's data, is Indian Express, sir, which is written in this piece, which says, oh yes, 100%, Manoj, come on. So, focus on women, focus on backwardness, focus on poor, focus on youth, focus on farmers. People understand this is a government and this is a leadership under Prime Minister Modi which delivers to the ground. And that is why they trust us. That's why they trust the PM. And that is the bharosa with which we are bringing in these kind of ground level difference in the quality of life. So the last, which I've been seeking your indulgence, is to say quite a few honorable members spoke about Kerala and Tamil Nadu, unfair treatment on account of perceived inequality and so on. I just want to highlight just 5 points. I won't go into details. The 5 points are, sir, we give so much but we don't get. Doesn't add up. States receive 100% of the state GST. States receive 100% of the state GST collected in that state. Nobody touches it. Approximately 50% of the IGST, which is collected for the transaction between states, is given. Approximately 50 goes to the states. And 41% of the central government share of the GST, CGST, is also devolved to the states based on Finance Commission's recommendations. So tax devolution, which is suggested by the Finance Commission, tells very clearly that 100% of what you collect in GST is with you, 50% of the IGST goes to you, 41% of the central GST also goes to the states. One. Second, industrialized states like Tamil Nadu have very many companies which are registered there, but which have pan-India operations, and they have concurrent tax payments. Example, sir, Tamil Nadu is one of the leading automobile manufacturing state. We all know that. Manufacturers make profit because these automobiles are sold across India. So you pay the tax, all of us pay the tax. And similarly, plantations from Kerala make profits selling their products to all over India. This explains why location of direct tax collection may not be fair and equitable principle, may not be on the fair and equitable, because the money comes from everywhere, but the tax is paid in the state in which they are registered. So if automobile companies are registered in Sri Perumbudur in Tamil Nadu and they pay their tax from there, it's not just that Tamil Nadu tax money is in it, all our tax money is in it. So when we say each state has, I've contributed this much, what have you given back? I want to say the tax is from all Indians, sir. Your company is registered there and you pay your tax. So let us think about it. Third, sir. Third, sir. Sir, there's a proverb in Tamil. I just half heard John Britta's. I'm tempted to say it, if you don't mind. Tadukala panja, paayila paiven.
உனக்கு தமிழ் புரியும். தடுக்கல பாஞ்சா பாயில பாய்வேன். Meaning, I raise an issue and if you address that, I'll jump to the next. There's no end. I'm sitting in a tadukku, I raise issue about it, I answer that tadukku related issue, but no, now I've gone to pai, answer that. I mean, come on, tadukkula panja, paila panjinde irukano. So sir, yeah, I'll still answer your cess and your surcharge. This is answered n number of times in this house, but n number of times it will always be raised. Like the other day, with your permission, I took a banter on Honorable Member Ami Yagnik, on the waiver written off. Permanent debate. It's been explained till the cows reach home, but we'll still explain it. I'm quite... No, don't worry. Write off and written off are grammatically different, that's all. So that has been explained several times, sir, but I don't mind. With your permission, I'll do it any number of times. Sir, third. Ma'am, I think men agree more than women agree amongst themselves. No, it's a reflection. Have you ever agreed with me? Sir. So third is, sir, physical infrastructure such as roads, rails, ports, airports are built by the center. And expenditure on internal and external security is completely the center's. So we have to make comparisons taking these points into consideration. The last 2 points, sir. I'm just giving this as an example. Tax devolution made to Kerala and tax devolution made to Tamil Nadu during the 14th, 13th, 14th, and the 15th Finance Commission. Kerala, sir, when that is 32% devolution, 13th Finance Commission, had 33,368 crores. When I'm saying 13th Finance Commission, its period was 2010-11 to 14-15, in that duration. 33,368 crores. Then when the 14th Finance Commission submitted its report and its report's recommendation was accepted, just as soon as Prime Minister Modi took charge in 2014, and that 2014 report came into effect from 2015-16 to 2019-20. By that time, because the recommendation of the 14th Finance Commission was 42% will have to be devolved to the states, so the 32 became 42 in the tax devolution. 15th Finance Commission, it became 41 because of Jammu Kashmir becoming union territory. So 15th Finance Commission, it is 41%. And 15th Finance Commission term, which is running now 2021 to 25-26. So I'm reading the numbers for those 3 Finance Commission terms. 33,368 crore for the 5-year period, 80,188 crore for the 14th Finance Commission period, 1.11 lakh crore during the 15th Finance Commission. 33,368, 80,188, 1.11 lakh crore now in the current period. Tamil Nadu, sir, during the same time, 70,825 during the 13th Finance Commission's time, 1.29 lakh crore during the 14th Finance Commission, which ended in 2020, and during the 15th Finance Commission, 2.36 lakh crores. Just see the amount. And where are we being told money is not getting devolved? You're getting the money, sir. Then the last point, sir, the 5th one, the credibility of this government, sir, is to financially empower the states can also be engaged from the fact that an issue which was pending from 1996-97 till 2014-15 happened, nobody touched it. That was actually money belonging to the states. Nobody touched it. It was lying as a pending amount, tax dues
amounting to 81,645 was lying there. It was Prime Minister Modi who in 2015, talking to the earlier, this happened in 2021, talking to the ministry, to the officials, to me, all of us worked together with the states. There was some money which the states owned the center. This money was owned by the center to the states. 81,645 crores was then released, reconciled amounts adjusted. The net amount which went to the states was 43,168 after adjusting what they owe the center. So an issue pending from 1996-97 gets sorted out in 2021 in favor of the states because Prime Minister Modi was also a chief minister once, and he knows what the states undergo in terms of money if it doesn't get reach them in time. That is why since 2020, I am standing here as a evidence myself to say at least 5 times I have asked the ministry to release fund in advance. So where they were supposed to get 1 installment, 2 installments have been paid in advance and not waiting for the due time so that the states don't suffer. So a chief minister becoming a prime minister has actually kept in favor of all the states and has never discriminated against any one state. In fact, he repeatedly says, until and unless all states grow equally, India cannot grow. So somebody who believes in that is never going to discriminate against any state. So largely I've covered the issue, sir. I wouldn't go on to talking about internet connectivity and issues like that, which many members raised, but I suppose the concerned ministers would also have their time to speak about it. Thank you very much for giving me. Honorable members, it is already 5:30 p.m. We have allocated 3 hours for a combined discussion on the bills mentioned at serial numbers 8A, 8B, and 2 hours for item 8C in the list of business. If you all agree, we may now take up special mentions instead of the bills. These bills will be taken up at a later date. Special mentions. Shri K.R.N. Rajesh Kumar, Shri Kamakhya Prasad Tasa, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर. Sir, in the last landscape for tea gardens of Assam, Tripura, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, a unique challenges presents itself. Educated youths have with no land and no income. No land, no income. The problem is seen especially in Assam, Tripura, and West Bengal. Recognizing the potential of this demographic and understanding the need of the inclusive growth, special skill development schemes have to be designated to empower these individuals as a catalyze positive changes in their lives. Tea garden educated youths often faces limited opportunities due to the absence of tangible assets. To address this, skill development initiative must be strategically crafted to offer a diverse range of training programs, equipping them with practical skills that extend beyond traditional agricultural practices. These schemes must focus on the vocational trainings, entrepreneurship development, and technology adoption. Vocational training must be enabled to the youths to acquire skills in demands, opening avenues for gainful employment. Entrepreneurship development programs have to nurture their ability to create, manage small enterprises, fostering a spirit of self-reliance.
Moreover, integrating technology into this initiative will ensure the youths as well versed in modern practices, enhancing their competitiveness in the contemporary job market. Digital literacy, e-commerce training, and exposure to emerging technologies will equip them to navigate the evolving economic landscapes by providing them with the tools and knowledge needed to thrive the diverse fields. These initiatives will give the way for brighter and more prosperous future for the unique demographic, fostering sustainable development in the tea garden communities. Sir, I urge the government through you to take necessary steps to in the matter that larger public interest to provide skill development schemes to the educated and semi-educated youths of the concerned states. Thank you, sir. धन्यवाद. श्री अलारम करीम. Thank you, sir. Thank you, sir. My special mention is demanding to protect the railway printing presses. The Railway Board has decided to close down its 5 printing presses by March 2023. These include the printing presses of Central, Eastern, Northern, Southern, and South Central Railways. But the decision was not implemented due to the strong objection raised by the workers and trade unions. Railway Board has released an order dated 3/5/2023, referring its previous orders on the subject and reiterated the decision to close down the press to meet up the uninterrupted supply of revenue earnings items such as UTs, PRS, ATVM tickets, RTC for MLA, MLC, APC, various types of passes, safety forms related with train movement, signaling, medical forms related with treatment, and personal forms related with staff matter. The existence of the railway press is required. In practical experience, it is observed that the suppliers are not performing their duties in proper way. The quality of materials are also not up to the mark. They are failing to supply the materials in right time, right quantity, and right quality. Due to paucity of materials, train movement can suffer badly. So outsourcing railway presses is required to be avoided for the rail users' interest and rail movement. In this scenario, I hereby urge the government to instruct the Railway Board to withdraw its decision and facilitate smooth operation of the railway printing presses in India. Thank you. Thank you. Shri Muzibullah Khan. धन्यवाद वाइस चेयरमैन सर. उड़ीसा में पीएम कुसुम योजना लागू करने की मांग. नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किसानों को सस्ती और सुलभ बिजली प्रदान करने के लिए 2019 में 3 घटकों के तहत विभाजित पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान लॉन्च किया है. घटक ए में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना शामिल है. घटक बी के तहत 20 लाख स्टैंड अलोन सौर पंप की स्थापना का लक्ष्य है और घटक सी में 15 लाख व्यक्तिगत ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौर्यकरण शामिल है. यह योजना मांग आधारित है जिसमें राज्य सरकारों के द्वारा भेजी गई मांगों के आधार पर धनराशि स्वीकृत और जारी की जाती है. उड़ीसा सरकार ने घटक बी के तहत 10,741 स्टैंड अलोन सौर पंप की स्थापना और घटक सी के तहत 50,000 व्यक्तिगत ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौर्यकरण की मांग की थी. हालांकि सितंबर 2023 तक केवल 5,741 सौर पंप स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,294 घटक बी के तहत स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा कंपोनेंट सी के तहत 50,000 कृषि पंपों में से 0 की मंजूरी दी गई है. पीएम कुसुम योजना के तहत मांगों को मंजूरी देने से देरी उड़ीसा के किसानों को बिजली उत्पादन तक समावेश पहुंचने से वंचित कर रही है. इस प्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से पीएम कुसुम योजना के घटक बी और घटक सी के तहत उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मांगों को मंजूरी देने में देरी के कारण की समय पर समीक्षा की
मांग करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। माननीय उपसभापति जी, मेरा स्पेशल मेंशन है छावनी परिषदों, कैंटोनमेंट बोर्डों में बीआई लाइन ब्रिटिश इन्फेंट्री, बीसी लाइन ब्रिटिश कैवलरी, आरएल लाइन रॉयल आर्टिलरी, इस तरह के नाम अभी भी चल रहे हैं, जो कि अब सेना के शहीदों के नाम पर रखे जाने चाहिए। देश भर की छावनी परिषदों में सामान्यतः B4 लैंड होती हैं, जिनमें झुग्गी झोपड़ी के ज्यादातर लोग निवास करते हैं। उनको लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में तो मतदान का अधिकार है, लेकिन छावनी परिषद के चुनाव में वे मतदान नहीं कर सकते, जिसका कारण B4 लैंड पर उनका अवैध बसा होना बताया जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत विभिन्न निर्वाचनों में मतदान देने का अधिकार है, परंतु यहाँ एक पर ऐसी विसंगति है, इस पर विचार होना चाहिए। इसी प्रकार छावनी परिषद के क्षेत्र में सेना के जवान रहते हैं, उनके वोट लोकसभा, विधानसभा और छावनी परिषद के चुनाव में पड़ते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत और यूनिट के ट्रांसफर होते रहते हैं। उसके लिए आने वाली यूनिट या जवान का वोट बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये लोग रोज यूनिट से, बैरक से कचहरी या तहसील नहीं जा सकते और पटवारी भी उनके यहाँ नहीं आ सकता। इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक ही मकान में रहते हुए लोकसभा और विधानसभा में मताधिकार है, छावनी परिषद में मताधिकार देने पर सरकार को विचार करने का मैं आग्रह करता हूँ। एक सुझाव मेरा इसमें एक लाइन का है कि वो B4 लैंड पर रहते हुए अवैध बसे हुए हैं, उनको इस शर्त के साथ अनुमति दी जा सकती है कि ये उनका सर, इसमें जमीन का अधिकार स्पेशल नहीं मेंशन होगा। इज ओनली एज पर द अप्रूव्ड। धन्यवाद। डॉक्टर सस्मित पात्रा। मुझे भी मालूम है। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, मैं अपना स्पेशल मेंशन मेरी मातृभाषा उड़िया में पढ़ रहा हूं और उसकी लिपि मध्य दी गई है। ओडिशार कृषकों समस्या समाधान दिगरे पदक्षेप नेबार आवश्यकता रही। तीनोटी गुरुत्वपूर्ण विषय अछि जहा ओडिशार कृषक मानकर समस्या संबंधी एवं जहार समाधान रो आवश्यकता रही। सर्वप्रथमे ओडिशार चाषी को फसल बीमा राशि देबारे विलंब होउछि। विशेषकर पश्चिम, उपकूल एवं दक्षिण ओडिशार अनेक कृषक एही कारणरू जंत्रणा भोगुचंती। द्वितीय प्रसंग हेउछि धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य MSP को क्विंटाल पिछा 2930 टंका स्थिर करिवार आवश्यकता रही। एही प्रसंगरे ओडिशा विधानसभा रे उपस्थित समस्त विधायक माने 25 मार्च 2017 रे सर्वसम्मति क्रमे सहमति मध्य प्रदान करिथिले। तृतीय प्रसंग हेउछि विशेष करी ओडिशार कृषकंकर विकास तथा कल्याण पाई स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट रो सुपारिश को कार्यकारी करिबार आवश्यकता रही। एही तीनोटी समस्यार समाधान पाई प्रथम भारत सरकार को फसल बीमार राशि को कृषकों को ठीक समय देवाकू पड़िबो। एहाकू कार्यकारी न कले ओडिशार कृषक माने बहु समस्यार सम्मुखीन हेबे। द्वितीयतः भारत सरकार द्वारा धानर MSP को क्विंटाल पिछा 2930 टंका स्थिर करने पड़िबो, जहा फलरे कृषक माने सेमानक उत्पादर उपयुक्त मूल्य पाई परिबे। भारत सरकार द्वारा स्वामीनाथन रिपोर्ट सुपारिश को लागू करने सहित कृषक मानकू C2 मूल्यर अति कम रे 1.5 गुण MSP देवाकू पड़िबो। ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक एही विषय रे भारत सरकार को अनेक थर चिठी लिखिथिले एवं मु दाबी करूछि जे केंद्र सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक द्वारा करा जायथिबा अनुरोध को गंभीरतार सहित नेबे एवं ओडिशार कृषक मानकर समस्यार समाधान करिवे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री निरंजन बिशी। Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Sir, I would like to draw your kind attention in the matter of an urgent public importance relating to the development of the Harishankar temple in the Gandhamardan hills of Odisha. The temple holds immense cultural, religious, and historical significance and is popular
popular pilgrimage site for both local and foreign tourists. Despite its potential, the Harishankar Temple and the Gandhamardhan Hills have not received the necessary attention for comprehensive development and promotion as a tourist attraction. This oversight limits the region's tourism potential and deprives local communities of the socio-economic benefits that a thriving tourism industry can bring. I therefore request that Ministry of Culture and Ministry of Tourism that the Harishankar Temple and its surrounding area be declared an India International Tourist Center. Moreover, sufficient funds and resources must be allocated for infrastructure development, improving railway connectivity, accessibility, and overall facilities in and around the temple and hills. Conservation and preservation measures are also needed to protect the natural and cultural heritage of the area. By declaring the Harishankar Temple and the Gandhamardhan Hills as an India International Tourist Center, their full potential can be unlocked, contributing to the growth of the tourism sector in Odisha. This move would not only boost the local economy, but also showcase India's rich cultural and spiritual heritage to the world. I urge the government through you, sir, to take necessary steps to develop the Harishankar Temple and Gandhamardhan Hills. Thank you, sir. Thank you. Shri S. Selvaganpati. I would like to bring to the notice of this August House that in the present situation, non-communicable diseases are in the high rise. The unrestricted marketing of unhealthy foods, which are high in fat, sugar, or salt, leads to rise in non-communicable diseases. Most of them also contain Ajinomoto, a salt called monosodium glutamate, MSG. It is a well-known cancer-causing agent. Sir, evidence shows that most of food advertising companies attract children with highly catchy advertisements, but with harmful contents to influence their food preferences. The roadside eateries are the major contaminants. They use all sorts of coloring agents and Ajinomoto indiscriminately in all sorts of recipes. The overindulgence in high-calorie food coupled with indoor leisure activities such as watching television, surfing net, and playing computer games all contribute to childhood obesity. Regionally, overweight and obesity in children under 5 years of age has increased from 5.8% to 8.1 between 1990 and 2012, which is above the global average of 6.7%. Recently, it is projected to be 10% in India. Overweight and obesity in adolescents between 13 and 15 years are highly prevalent. Incidentally, we are now celebrating the year of millets. The impetus given to the campaign by our Honorable Prime Minister has taken the message to nook and corner of our country. I request through you, sir, that the government should consider this matter as very serious one and initiate immediate action to curb the unopposed marketing of unhealthy foods in the country. Thank you. Thank you. Dr. Amar Patnaik. Thank you, Chairman, sir. Sir, I rise to raise a demand for waiver of 18% goods and services tax on Kendu leaves. In June 2023, Honorable Chief Minister of Orissa, Naveen Patnaik, wrote to the Union Finance Minister reiterating the state's demand for the exemption of 18% GST on Kendu leaf. The reason is the adverse effect it had on the livelihood of lakhs of tribals traditionally engaged in plucking Kendu leaves. Kendu leaf, known as the green gold of Orissa, is a minor forest produce that essentially acts as the financial backbone for the leaf pluckers, 90% belonging to tribal communities, binders, and seasonal workers. The 28% GST levied on BD, furnished products made from Kendu leaves,
creates a double taxation burden on the pluckers and workers, as the traders who get the tenders in turn pay them less for the leaves due to high taxes. This in spirit goes against the Forest Rights Act 2006 and the PESA Act 1996, as it impacts the livelihood and social welfare of the already marginalized tribals. Being the third largest producer state of Kendu leaves in India, Kendu leaf is an important non-wood forest product of Odisha. To protect the interest of workers, Odisha government announced a special package in 2020, which included rupees 1,000 for each plucker and rupees 1,500 for each seasonal worker and binder. They were also covered under the Biju Swasthya Kalyan Yojana health scheme. Odisha has also became the first state to provide bonuses to Kendu leaf pluckers. Given its importance for Odisha and its people, sir, through you, I urge the government to withdraw the GST on the collection of the Kendu leaves. Thank you, sir. Thank you. Shri R. Girirajan. Thank you, sir. I would like to bring the notice of this August House. It is unfortunate that toll charges at toll gates are being hiked on a regular basis. It affects badly the transportation of raw materials across the country and the state, and will lead to escalation in prices, essential commodities, particularly food items, in addition to the price set up by the oil companies for petrol and diesel. The union government collects rupees 5 and 2 per liter sale of petrol and diesel as infrastructure development fee in 21-22 alone. 3,849,000 MT of petrol, 7,66,59,000 MT of diesel have been sold all over the country, and rupees 2,70,000 crore was collected infrastructure development fund. Even after collecting 20 lakh crores of road infrastructure development in past 10 years, high toll charges is unjustifiable. The law says that only 40% of the fee should be collected after the deadline for road construction, but full toll charges are being collected at many toll gates which are more than 10 years old. The toll hike for commercial vehicles like bus, lorry, goods vehicle, call taxi, tourist vehicles, etc. is borne by the people only. The steep increase of toll collected will automatically increase the retail price and ultimately passed on the public. This is the root cause for the escalation of prices beyond the reach of common people. Therefore, I urge the government to withdraw the increased toll charges at all toll gates and to close all toll gates which are collecting toll for more than 10 years in Tamil Nadu. Thank you, sir. Valid. Thank you. Shri Naresh Bansal. धन्यवाद उपसभापति जी. Demand to develop Uttarakhand as a sports club, sports hub. देवभूमि उत्तराखंड सीमांत क्षेत्र होने के साथ ही इसमें हिमालय, चार धाम, जीवनदायिनी नदियां व वन हैं. उत्तराखंड के निवासी बहुप्रतिभा के धनी हैं. वह उत्तराखंड ने संस्कृति, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, वीरता और खेल में पूरे देश को बहुत सारे रत्न दिए हैं. यहाँ से लगभग हर घर से एक जन भारतीय सेना में शामिल हो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं. वह अन्य सरकारी, गैर सरकारी पदों पर सेवा दे रहे हैं. आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड प्रेम जग जाहिर है. वह मोदी सरकार में उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो रहा है. वर्तमान में खेल की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान बढ़ाया है, किंतु यहाँ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं का अभाव है. जबकि उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने
हर तरह की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग लेकर पदक जीते हैं व राज्य का नाम स्थापित किया है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड को खेलों का हब बनाया जाए, क्योंकि यहाँ साहसिक क्रीड़ा जिसने बिछेंद्री पाल जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिला पर्वतारोही को दिया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के लोगों का हिम क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, कुश्ती, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, क्रिकेट व निशानेबाजी में योगदान रहा है। तमाम ऐसे दर्जन लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश का सम्मान बढ़ाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार उत्तराखंड को एक विशेष स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करे, ताकि यहाँ के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। सर, बत्ती जलने में आजकल वक्त ले रही है। Oh, thank you. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. Good to see you there. My subject today for the special mention is to need to explore sustainable alternatives to stubble burning. It is the same story every winter, sir. The capital and adjoining regions are engulfed in smog, setting fresh records of extreme air quality index, AQI, levels due to stubble burning in northern states. While some efforts are being made to lower AQI levels through temporary sprinklers, imposing robust vehicular movement guidelines, and issuing numerous health advisories, long-term sustainable alternatives to a major source of pollution remain unexplored. There are various eco-friendly crop residue alternatives that the government can explore to mitigate climate hazards posed by stubble burning. Biomass briquettes, compressed blocks made from residual straw and paddy, provide an environmentally conscious substitute for coal. When used in thermal power plants, these briquettes can significantly reduce the carbon footprint. Leftover paddy can be used innovatively by transforming it into various products such as paper, cattle fodder, animal bedding, agri-fiber boards, and packaging materials. These practices promote sustainability and create monetary benefits from leftover paddy instead of incessant burning. So, the Indian Agriculture Research Institute has introduced a bioenzyme that, when sprayed on paddy residue, facilitates decomposition and transforms it into nutrient-rich manure within a couple of weeks. Other viable alternatives such as happy seeder, bioethanol production, and providing better subsidies to other crops should also be explored by the Agriculture Department. Educational promotion of green farm practices among farmers and highlighting associated benefits should accompany these initiatives. I urge the government to start implementing sustainable alternatives to stubble burning before the next winter sets in. Thank you very much, sir. Thank you, Professor Jha. Shrimati Mahua Maji. Dr. Ami Yagnik. So my special mention is regarding demand for bringing innovative policies in plastic waste management. Plastic overconsumption and mismanagement of plastic waste is a growing menace, causing landfills to overflow, choking rivers and threatening marine ecosystems. This has a negative impact on our environment, and valuable resources are harmed. Efforts to manage plastic waste have been implemented at the national, state, and local levels, including ban on single-use plastic items. The Government of India notified the Plastic Waste Management Rules 2016, the Plastic Waste Management Amendment Rules 2018, the Plastic Waste Management Amendment Rules 2021, and the Guidelines on Extended Producer Responsibility for Plastic Packaging through the Plastic Waste Management Amendment Rules 2022. Plastic waste management remains a significant challenge due to lack of infrastructure, low waste collection rates, inadequate funding, and lack of recognition to the informal recycling sector. Plastic waste generated is currently utilized for road construction, waste to energy plants, waste to oil plants, and in cement plants for co-processing. However, local waste management infrastructure has not kept pace, resulting in large quantities of mismanaged waste.
In this context, I urge through you the government to bring policies whereby innovative economic instruments such as incentive mechanisms are created and investments are identified across major economic sectors that would reduce plastic waste. The government should come out with solutions whereby producers and importers of plastic goods take the responsibility for the disposal of plastic waste. A major push would be market-based tools such as tax exemptions, subsidies, or grants and loans that can be applied to support businesses to incentivize the prevention, minimization, and recycling of plastic waste. Thank you, Dr. Yagnik. Shri M. Shanmugam. Thank you, sir. My demand in this special mention need to review the revised EPF pension fixation formula. Sir, after the introduction of family pension dating back to 1972, EPF 95 was introduced in 1995. And at the time, the ceiling limit pensionary salary was rupees 5,000 for 7 years, increased to 6,500 for 13 years. From 2014 onwards, the pensionable salary was increased to 15,000. The method of pension calculation prior to 95 was determined on the basic year of service and accordingly, lump sum amount was paid. From 96 onwards, the calculation was on the basis of 5,000 for the first 7 years, 6,500 for the next 13 years. From 2014 onwards, on the basis of rupees 15,000, the ceiling limit divided by 70. However, on the analysis of the government formula, it is worked rupees 3,636 per month. Whereas if the amount is worked at the EPF rate of interest, it comes rupees 5,901 per month. Similarly, in the government decided to getting option from the employee for full pension, the employee has pay more contribution and consequently, the formula for pension followed by EPF at present should be changed. When the government is asking for joint option forms from employees and employers for revising the pension, it is high time pension calculation formula should also be reviewed and revised. Hence, I would demand from the Honorable Labour Minister that the EPF pension fixation formula should be revised, reworked in consultation with the trade unions at the earliest. Thank you. Thank you. The remaining special mentions will be carried forward. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, 8 December. Thank you.